All right, short one, an impromptu one. Welcome to Beer पे बातचीत. Hope सबको मजा आ रहा है. Hope first of all hope सबका मंडे अच्छा जा रहा है यार. That is the most important thing. First day of the week वो बहुत जरूरी है कि सबका अच्छा जाए. Um, and we are of course now the international break is on. We are now in the international break officially. And some good things, some bad things. We are also, we've got to know our FA Cup semi-final opponents, and there is some news about Lord Divock Origi, our Lord, our Savior, finally deciding to be the Lord and Savior of another club. But yes, Manas, कैसा लग रहा है भाई? मंडे कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा था यार, आज थोड़ा फैमिली वर्क था, सब वो निपटा रहा था। वही था। बट अप्रैल में अभी हम जाएंगे। अभी मार्च में तो है, बट अप्रैल में जाएंगे। हमारा नेक्स्ट गेम अप्रैल में है एंड अप्रैल इज गोना बी सो इम्पोर्टेंट यार। मतलब इतने भारी भरकम फिक्चर्स हैं, वही बहुत मजा आने वाला है निधि। मतलब मैं तेरे को बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ फॉर अप्रैल। इट्स गोना बी समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था 1977 के बाद, आई थिंक 77 या 79 के बाद है। ऐसा जो फीलिंग है, ऐसा जो है समीर, ऐसा जो वाइब है अराउंड द क्लब, वो 1977 के बाद ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मतलब वी आर इन दैट एरा ऑफ जर्गन क्लॉप का लिवरपूल, वेयर वी आर एंटरिंग इन द लास्ट 2 months of the season where we can potentially win quite a lot. So मैं बहुत ही excited हूँ भाई। Like even yesterday when we won against Forest, निधि हम अच्छा नहीं खेले, नहीं, कल बिल्कुल अच्छा but नहीं खेले. we have just developed the art of getting over the line, bro. Like हम लोग we are doing it. We're just doing it somehow. यार देख, ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूं, फॉरेस्ट इट वाज ना, आई डोंट नो व्हाई people expect this to be cakewalks. मतलब Forest are a team that beat Arsenal, then they beat did they beat United? No, Middlesbrough beat United. फॉरेस्ट ने एक और लेस्टर सिटी, एंड लेस्टर सिटी को बुरी तरह धोया था उन्होंने. तो Hmm. मतलब वो थोड़ा लोगों को लगता है इतना इजी है, बट मतलब फॉरेस्ट के साथ तो गेम हमेशा टफ होने ही वाला था. एंड लाइक यू सेड, मतलब as long as we have developed habit of grinding out result, that's हाँ, all that matters, right? उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. मतलब 1-0 ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था जो था. अभी had a lot of moments against us also, तो ठीक है. हाँ, I am very happy. I mean, in April we are in all four competitions. We have won, I mean, and won one of them, not four, three, and won one of them. तो hmm. मतलब इससे अच्छा टाइम क्या होगा? सही बात है। रुशील, हाँ, 19 का मैंने पढ़ा कि एट द एंड ऑफ द सीजन ही इज गोइंग टू रिटायर। काफी 19 काफी एनिमेटेड टाइप रेफरी है, हमेशा रहे थे, और ट्रैमले रोवर्स फैन है। सो he's had a good stint at refereeing when it comes to England. So I'm happy for him as long as he's doing it on his own terms. Do you guys think we need a backup at central defensive midfield and right back position? Right back पे तो पक्का नहीं थी, मेरे को लगता है कि आई आई एग्री, आई एग्री. राइट बैक पे तो चाहिए, वी नीड बैकअप. सीडीएम पे समहाउ आई फील नहीं करेंगे हम, बिकॉज दीदी तू बिकॉज बियर नहीं फबीन्यो. पिला क्या? बियर पे बातचीत है। हाँ, लाता हूँ थोड़ी देर में. अच्छा, हाँ। आई डोंट थिंक हम लोग इस पे करेंगे, मतलब सीडीएम पोजीशन पे. Fabinho है who, I mean, touchwood, he hardly misses a game. Then we have Milner, then we have Henderson. Tyler Morton is developing well. तो थोड़ा, I don't think we will need CDM पे backup, but ठीक है. निको विलियम्स Right. भी प्रमोट होने वाला है, सो नैट फिलिप्स apparently as well is going to get promoted. So with Bournemouth is in a good position. So interesting होगा उधर क्या होगा। लियोनेल गोट मेसी भाई, आई थिंक लिवरपूल सिटी विल डिसाइड द टाइटल विनर। अभी तो ऐसे ही लग रहा है, बट निधि हम तो सिटी को 2 बार खेलने वाले हैं भाई अभी 7 दिन में।
मैं वही बोलने वाला था कि ये दिस इज गोइंग टू बी वो फिक्सचर अप्रैल का. लेट मी एक्चुअली जस्ट शो यू द फिक्सचर्स फॉर अप्रैल. लेट मी शेयर हाँ माय स्क्रीन एक्चुअली. April is going to be so for us. It हाँ is Benfica City, Benfica City. For City, it is Atletico Liverpool, Atletico Liverpool. That is that is insane, and not just for us, for City as well, to play those teams. And at that times it is, it's I don't know, yeah. It's not something that, first of all, I don't think that has happened a lot with yeah. City. Guys, we'll take your comments. Just thoda mere ko, I'm just catching up, तो थोड़ा time दे दो. Once Manas starts talking, I'll start taking your comments. So, but हाँ, अप्रैल तो फुल पागलपन है यार फिक्सचर्स के मामले में. I'll just share my screen and show it to you. हाँ एज यू डू दैट मेरे को तो सिटी का जो है ना लाइक सिटी आर प्लेइंग बर्नली देन दे आर प्लेइंग एथलेटिको जो ना comparative I mean comparatively certainly is a tougher fixture than Benfica and Simeone का जो brand of football है ना so he will ensure that City अगर जीते भी they मतलब they give it their all so it's going to be very interesting. City and this the thing is the Nidhi like they'll be traveling to Madrid, they will be going to Wembley, they'll be in Manchester. So उनको भी काफी travel करना है हमारी तरह like we have to travel to Portugal Portugal. and then Wembley. So बहुत ही interesting times है bro like yes sorry तो यार fixtures भाई, इसमें मेरे को ना एक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं. Everton are in a relegation battle, and this is a Merseyside derby, so it is tricky. Newcastle are playing very well. Aston Villa, Gerrard away. Oh God. फिर postponed है वो City. postponed हाँ, है हाँ, वो पोस्टपोन्ड है, पर पता नहीं बीच में शायद डाल नहीं दें, वो एक अलग फिक्सचर कंजेशन हो जाएगा. वो मई यार में ये होगा एक भी इजी, मतलब एक इजी तो खैर कोई नहीं होता है. यहाँ मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कोई नहीं दिख रहा है मैच. Watford should be straightforward Nidhi at Anfield वुड like बी. मतलब अभी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम थोड़े नर्वस होते हैं मैं समझ रहा हूँ लाइक हम एज अ फैन वेयर इज योर क्या हो वीडियो? गया वो कैमरा पता नहीं क्या हुआ वापस करता हूँ वॉटफोर्ड एज मतलब एज लिवरपूल सपोर्टर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि हमें थोड़ा डर लगता है बट यार आई मीन ऑनेस्टली ब्रो वी शुड बी प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड आई पर्सनली थिंक यार ये ना निधि कुछ ये इशू तेरा, हुआ है हाँ, वो फोन, मतलब तेरा कैमरा का वायर थोड़ा लूज हो गया होगा, उसको दोबारा ये कर मैं दे. रिजॉइन करता हूँ निधि या हाँ यार, रोहन, वीड लव टू हैव यू ऑन. कभी कभी पक्का प्लान करते हैं. What do you think of the recent injuries? Are they all facades or genuine, considering the international break? I don't think they're facades. I think they're genuinely injured. Robo को तो COVID हुआ है, and Trent definitely felt his hamstring. So, but again, we never said they were like how genuine, how serious it was. The latest news is that it's not that serious. So, and let's see what happens. Dybala for free. Yeah, yeah, we have done a video on this, actually, Abraham. And I think I can speak about myself. I don't think it makes sense for Dybala, the kind of footballer he is, the kind of club we are. I don't think Dybala makes sense for Liverpool. Not to mention that, yeah, I think Dybala prefers a move to somewhere in Italy, or for even Spain. Um, so I don't think Dybala for Liverpool makes sense, honestly. But we've done a video on this actually, on Dybala. You can check it out on our channel. Um, Umang Goyal says, Manas, it is almost a month and we've not given decent first half performance. भाई मतलब 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 मैं इस पे ये देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट. मैं बोल रहा हूँ कि इट हैज ऑल्सो बीन अ मंथ वेयर वी नॉट लॉस्ट अ गेम. वी वन ऑल द गेम्स, not just month like lamba. But I get what you're saying. It could be a problematic when we play like some a team like City, where they will punish us if we play like that. So I get it, but I think in any
team that wins stuff, there are never periods where they'll just steamroll the opposition or at all times. There are times where they will, stumble but still win. By the way, we are close to 50 people on the stream. So, by the way, guys, if you're new here, a subscribe would be absolutely brilliant. We've just hit 50,000 views on YouTube. I know बहुत छोटा नंबर है, बट हमारे लिए बड़ी बात है. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार. थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए एज और कंटेंट वीडियो क्रिएटर. वीडियो वीडियो पे लाइक मारो यार। अभी मैं देख रहा हाँ, हूँ सिर्फ 26 लाइक्स है। अगर 44 पीपल देख रहे हैं तो लाइक कर दो। Because I think it will be unreasonable to expect that we will steamroll every opponent. Yes, Forest was a tough game, but we can't expect to be easy. Fans and non-fans should understand this. Yeah, Ayush, I agree, but I also understand where Umang is coming from. After the Leeds game, see, मेरे को I was speaking with some को तो बोला था नॉरिच के अगेंस्ट 3 ठोका है या नॉरिच था लीड्स के अगेंस्ट 6 ठोका तभी लीड्स बहुत ही घटिया फॉर्म में था। उसके इर्द गिर्द हम लोग कुछ खास खेले नहीं है when it comes true. to like offensively. But we have to, Umang, we have to be pragmatic at times. Now we are not that Jurgen Klopp team which is, just trying to play good football. हम लोग एक ऐसी टीम है we're trying to win it all. So when you want to win it all, you have to cater to everything around you. एंड योर ओपोनेंट्स लाइक योर्गन क्लॉप का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था वो बोल रहा था कि यार मैं उठता हूँ फिर मैं कौन से होटल में मेरे को पता नहीं होता कभी कभी दिस इज हाउ टीम की हालत है दे ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द कंट्री यूरोप इज वेल they've been in all competitions they are tired afcon tha there is no break the season started early it will end early फिर world cup है like the players are tired and the way they are performing I think वो हमें credit देना पड़ेगा to Liverpool, to Jurgen Klopp, to everyone involved. Since Dybala isn't signed new contract with Juve और इतने सालों से Dybala का रूमर सुन रहे हैं क्या लगता है Dybala साइन करना चाहिए क्योंकि फ्री में आ जाएगा देख संपत इशू क्या है ना कि Dybala को हम फ्री में साइन करने की दिक्कत नहीं है बट पॉइंट ये है कि वेजेस apparently 8 million Juventus was offering over per year but वो नहीं हो रहा है बट आई थिंक इट फेल थ्रू डिबाला खेलेगा का हमारे सिस्टम डिबाला कांट कैन नॉट प्रेस टू सेव हिज लाइफ द वे वी प्रेस द वे द वे माने साला जोटा डियाज प्रेस करते हैं देयर इज नो वे डिबाला विल प्रेस दैट वे सो द साइनिंग डजंट मेक सेंस वो फ्री में अवेलेबल है डजंट मीन दैट हम लोग साइन कर लें उसको Gary Neville said that April and May defined their 99 season. I think it will be true for us as well. यार वो तो है ही यार मतलब in any team except for when we won the league in 20 where the league was done in by January or something. Um, this is true for all the teams here. I mean these are the times where crunch time मतलब अगर हम 2019 की बात करें तो April and May was absolutely we were at our peak. We won the UCL at that time. So of course this is true for everybody, but yeah, April तो यार अलग ही लेवल पे है मतलब the fixtures we just discussed it a while back. April तो अलग ही लेवल पे है. uh, Ayush Kern says, is there any chance United can beat Liverpool? Yes, of course there is a chance. uh, I mean, why not? I mean, of course, obviously it is not going to be easy to beat Liverpool at Anfield, but technically तो possible है. मतलब we can have an off day, they can have a very good day, but मतलब देखते हैं. चांस तो 100% है बट मुश्किल है उनको करना अभी तो फिलहाल बहुत नेगेटिविटी अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ये ना व्हाट्स अप रॉक बाबा Rock Baba in the house. यस almost 20k subscribers if I'm not wrong guys I'm sure you know who this Congratulations, Rock man is Baba. मिश्रा जी Congrats. के 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं अगर हुए नहीं है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज डू बिल्कुल करो यार. सब्सक्राइब बट निधि हम लोग ये जो क्वाड्रुपल की बात कर रहे हैं ना दो मैच अगर हार गए ना अगेंस्ट सिटी दोनों तो हाँ, सब टाइटल खत्म. फिस है प्रीमियर लीग का टाइटल खत्म और अगर एफए कप में तो हार गए तो ऑब्वियसली आउट ही है सो ये जो हाइप है ना
अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि नैरेटिव एक बिल्डअप हो रहा है कि लिवरपूल कैन विन एवरीथिंग, बट रियलिटी है कि सिटी कैन आल्सो विन द ट्रेबल। एंड बी सी टू बीट, अगर हमने हाइपोथेटिकली सिटी को लीग में हरा भी दिया, ठीक है हाइपोथेटिकली, तो उसके बाद हमें 7 मैच कंपलसरी जीतना है लीग में। और अगर हमने सिटी को सेमीफाइनल में वेम्बली में भी हरा दिया, तो हमें शायद से चेल्सी को हराना है। ओके, सो ये भाई जो क्वाड्रुपल का है ना, ये जो कॉन्सेप्ट, ये हमें ना एज फैंस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक नैरेटिव है, एक फेरी टेल है जो सब बेच रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वन स्लिप, pun intended, can literally ruin our season. And यार, we should just take a game at a time. 16 games to go. Let's, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा to all fans, just enjoy this. Just enjoy this phase of being a Liverpool supporter, निधि। इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा अपने को, honestly bro। यार, मैं मतलब मैं क्या बोलूं, ये तो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, और ऑनेस्टली क्वाड्रुपल इज अ बिट ऑफ अ जोक यार। वी हमको ही नहीं अच्छा होना होगा, हमारे आसपास भी सब कुछ परफेक्ट होना होगा। तो क्वाड्रुपल, यार आई एम जस्ट हैप्पी कि वी आर देयर इन ऑल थ्री रिमेनिंग कॉम्पिटिशंस। आई होप वी विन एज मच एज पॉसिबल, बट क्वाड्रुपल यार थोड़ा ज्यादा है, आई फील। बिकॉज क्वाड्रुपल के लिए हमको, लाइक यू सेड, सिटी को पहले सेमीफाइनल में हराना होगा, फिर सिटी को लीग में हराना होगा, बाकी के 7 मैच जीतने होंगे, फिर बायर्न को हराना होगा, दैट इज बिफोर बिफोर बेनफिका को हराना होगा, बायर्न को हराना होगा, उधर से रियल मैड्रिड, सिटी, चेल्सी, ये 3 टीम्स आ सकती हैं। हाँ, विलारियल इज द फोर्थ ऑप्शन। चलो मैं ऑर्डर में बोलूं तो सिटी, रियल, चेल्सी एंड विलारियल। ये दिस इज द काइंड ऑफ कंपटीशन वी हैव टू बीट, एंड दिस इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट जो हमने किया है, राइट? तो बट निधि, तेरे को पता है, अगर अगर ना लाइक, मैं जानता हूं कि लोग कभी कभी इतने शॉर्ट साइटेड हो सकते हैं कि अगर हम लोग हार गए ना एक मैच इधर उधर, राइट्स हो जाएंगे भाई कि मतलब ये टीम डिजास्टर है, वी बॉटल्ड इट, लाइक ये सब होगा, जो मैं नहीं यार, चाहता हमारे सपोर्टर्स ऐसे वो बात करें, बिकॉज मानस मानस वो तो मतलब अनलेस हम लोग अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, अगर हम लोग दो दो कंपटीशन भी जीत गए ना, तो भी सोशल मीडिया पे तो लोग बोल ही देंगे कि ये तो, अरे ये तो फिर मतलब कुछ अलग नहीं किया। एंड एफए कप में कोई किसी ने लेवल्स दिखा दिए, एंड वो सब जो बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि लिवरपूल इन द मड, या जो भी वट एवर द किड्स आर सेइंग दीज डेज, वो तो बोलेंगे ही, वो तो मतलब कुछ नहीं कर सकते हम उनका। And speaking of Satvik, what according to you is a successful season would look like? Reasonably, I think if we win one more trophy this season, it's a very successful season for me, right? Hopefully, it is one of the Premier League or the Champions League, right? I'd love to win more, but मतलब दूसरी टीम भी जूते पहन के आ रही है ना फुटबॉल खेलने, यार वो लोग भी मतलब ऐसे थोड़ी ना, they'll also want to win ना। हाँ मतलब So एक और ट्रॉफी अपन जीते यहाँ से, it is a very, 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 very good season, bro. Like yeah, it is genuinely a quadruple के बाद छोड़ो. If we win one more trophy from here, I'll be a very happy Liverpool supporter, bro. Like I'll be over exactly. the moon. Like we have come from dark ages to we are seeing the light now. Yeah. Let's not be too greedy, bro. This नहीं is नहीं, what I. no, लेट्स बी ग्रीडी। आई एम ग्रीडी, आई वांट टू विन एज मच एज पॉसिबल, बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर तीनों ट्रॉफी नहीं जीती तो सडनली इट्स अ डिजास्टर। इट इज हाँ, अमेजिंग। बाय I द वे, totally. ऑलमाइटी ब्लूज अंकित इज इन द हाउस, सो गाइस, अंकित के चैनल पे आई जस्ट डिड अ क्विज। He puts out some absolutely amazing football content. There, of course, Ankit is a Chelsea fan, but you should, head over to his channel and subscribe to him. He's absolutely brilliant. Let's take a few comments here. Yeah, yeah, yeah. Sahil says, I think if we win with a great margin against Benfica on 6th, it might be easier for us to put a good team against City in the semis. सेमीज की तो बात नहीं है बिकॉज वी प्ले देम इन द लीग आफ्टर द बेनफिका गेम,
So the first leg, आप जो sixth का बोले हो, so semis तो is after the second leg of Benfica. So it will not. But the reality is, Sahil, that if we do play well in the first leg, we can actually rest players in the second leg at Anfield, and then probably be more fresher for the Wembley game, like you're mentioning. The Anfield Diary. Yeah, I agree. I agree. This is testament to Klopp and the players. If you remember, मैं बहुत ज़्यादा हॉटसन वॉटसन के टाइम में भी नहीं जाना चाहता हूँ. मैं तो बोल रहा हूँ कि when this season started, everyone was like, it happened in one of our chats, and again, this is not against anybody. It was like when United signed Ronaldo and Chelsea signed Drogba, and it was there was so much negativity from our own people saying, abhi gaya, matlab we whose fault will it be if we don't win the title? um yeah, from there itself it's a big position to be in na. मतलब AFCON के टाइम पे इतना नेगेटिविटी, चेल्सी से we had just drawn and लेस्टर से we had lost, and it was like, क्लॉप का legacy is equal to whatever. यार, the thing is, तो आपके सामने कौन है? आपके सामने there is a oil sponsored state. Again, with all due respect to Manchester City, they are an amazing team, but the reality is financially they overpower us multiple times. Yeah. But to still be in this position after going 14 points behind, तो वो Yeah. amazing है. Anyway, let's not make this a lecture. Guys, Pranav, please do like the video. Please do like the video, and if you are new to Menace in the Monk, please do subscribe. हम लोग ऐसी हार्टफेल लिवरपूल कंटेंट कर रहे हैं, and thank you so much whoever is watching right now. You guys are staying good. We really appreciate it. Hope in our own very little way हम आपके मंडे को थोड़ा better बना रहे हैं. Pranav is saying I just want another Premier League title. After that, it'll be bonus for me. Yeah, if we win, if I mean, यार प्रणव वही वही बात है कि if we win the Premier League, I'm sure Pranav you look like a young guy in your display picture भाई. So I think you as a fan आपने सिर्फ एक ही टाइटल देखा होगा. So अगर दूसरा देख लिए अपने लाइफ टाइम में जो अभी देखा है तो बोनस क्या, लाइक सोने पे सुहाग है यार. If we win the Premier League, let's be honest bro, like यार it's अभी प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग उसमें से एक भी जीता ना, चलो मैं बोल रहा हूँ ना कि इफ वी विन द प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग ना, निधि मेरे नाम का टैटू करेगा अपने बदन पे. नहीं, मानस इतना लिखे भी मत, मानस. इतना भी, मा, हाँ, इतना भी मतलब लाड़ में मत था. मतलब बट मैंने से द संस्कृत में मॉन्क, मानस लिखे. हाँ, मैंने से द मॉन्क का टी शर्ट है ना, आई विल आई डू अ गिव अवे. आई विल गिव 5 टी शर्ट्स अवे टू 5 पीपल. ठीक है, चलो. यार अगर लीग जीते तो सालों तुम लोग सबको खरीदना चाहिए, लाइक खरीदना अगर तो हम वैसे भी लीग चाहिए. जीते दैट्स द रियलिटी, तो यू शुड पे फॉर इट. बट या वी विल हैव अ गिव अवे फॉर श्योर, विल हैव अ गिव अवे फॉर श्योर. बट डू यू डन. सपोर्ट डू यू सपोर्ट दीदी, क्या रिप्लाई था ऑलराइट, ऐसा? अब मैं वही देख रहा हूँ. नहीं एक नहीं, तो ये रचित, दानिश का क्या रिप्लाई डू था? यू सपोर्ट द अपकमिंग यूसीएल फॉर्मेट रिफ्रेश और डजन ईसीएल साउंड बेटर? यार तनीश, क्या इस चीज का आंसर? दिस इज लाइक चूजिंग बिटवीन, um you know this is like choosing between, your toe to be stuffed by the door or your little toe to be uh, stuffed by the door. मतलब this is like, तुम चूज कर लो कि राइट पैर के टो को स्टब करना है कि लेफ्ट पैर के टो को स्टब करना है. दोनों ही बकवास है यार. मतलब यूसीएल का नया फॉर्मेट क्या, क्या मतलब, आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस. एंड देन अगेन दिस, बट दिस इज माय पर्सनल thought on the format. I don't think it makes sense. ESL, though, of course, does not make sense, but I'm also realistic enough to know that some part of it is going to come. It's Yeah. like we have no choice. आने ही वाला है वो, देखना ही पड़ेगा. एंड इट इज वेरी इजी टू से इन इमोशन कि मैं मैच ही नहीं देखूंगा. द पॉइंट इज, आप लिवरपूल को सपोर्ट करते हो, आप चेल्सी को सपोर्ट करते हो, आप यूनाइटेड, रियल, बारसा, डॉटमंड, जिसको भी सपोर्ट करते हो, जब आपके टीम का मैच होगा ना, आप देखोगे, वो आप नहीं छोड़ सकते हो. दिस इज लाइक हार्ड वायर्ड इन टू आवर ब्रेन्स. तो मे बी falling out of love with it a little bit, yes, that definitely happened with me with cricket when the IPL started. अभी ये हालत है कि मैं क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखता हूँ.
फुटबॉल के साथ पता नहीं, मतलब अगेन, बट दिस दीज टू बोथ दीज फॉर्मेट्स आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ईदर ऑफ देम ऑनेस्टली, बट आई नो कि होने ही वाला है, कुछ कर नहीं सकते। ये बात तो सही बोला निधि तू कि चेंज इज इनएविटेबल, ये तो पक्का है। बट अभी एग्जैक्टली ईशान, लाइक इट इज इनएविटेबल, अभी कैसे होगा क्या होगा पता नहीं। गाइस वी आर वन लाइक अवे फ्रॉम 50, प्लीज डू स्मैश दैट लाइक बटन, इट विल बी ग्रेट फॉर अस। एंड अगर आप वेयर न्यू एल्स डू यू थिंक मैन सिटी विल रियलिस्टिकली ड्रॉप पॉइंट्स? बहुत मुश्किल है यार बोलना यार रोशन। हम तो ये ना, ये एक चीज और भी है, हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि वी कैन ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स। वॉटफोर्ड अभी भी प्ले, यार वॉटफोर्ड है, फिर देयर इज एवर्टन, न्यू कासल, मैन यूनाइटेड। द पॉइंट इज द स्टैंडर्ड्स आर सो डैम हाई दैट अ ड्रॉ इज इनफ टू डिरेल इट। ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं तो हम भी ड्रॉप कर सकते हैं, सिटी भी ड्रॉप कर सकती है। इट इज लाइक, I don't know, man. It's like, a tightrope walk. Very difficult. Okay. Manas bhai, question for you. I'll get my beer till the time you answer this question. Manas, but do you control your emotions while talking about Liverpool on social media in front of football legends? Yeah, I don't know. By the way, 56 likes now. Thank you so much, guys. ये आप ही बताओ यार, मैं क्या बोलूँ? मैं आई ट्रीट मैन यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, गैलाटासराय, एवरी क्लब मेरे हिसाब से तो आई ट्राई टू ट्रीट देम इन द सेम पॉसिबल वे। बट ऑफ कोर्स जब लिवरपूल की बात आती है तो ऑब्वियसली थोड़ा पैशन ज़्यादा होता है, रिलेटेबिलिटी ज़्यादा होता है, लव ज़्यादा होता है। सो द क्वेश्चंस, बाय द वे येस्टरडे एक अचीवमेंट अनलॉक हुआ। आई गॉट अ कमेंट ऑन माय इंस्टाग्राम स्टेटिंग दैट आई डिसलाइक लिवरपूल, मतलब व्हाई एम आई सो अगेंस्ट लिवरपूल अब। So by the way, 50 people watching, thank you so much guys. I'm taking a screenshot on my phone, this is huge for us. uh, yeah, this is beer pe I Baatcheet, please do saw like I comment. saw your screenshot. I saw your screenshot about you disliking Liverpool. मैं तो हंसा पहले 2 मिनट। हाँ मतलब वही बात है कि आप ऑफसाइड के बारे में क्यों बात कर रहे थे, आप पेनल्टी के बारे में क्यों बात कर रहे थे। अब देखो, मैं लिवरपूल सपोर्ट तो करता हूँ, बट मेरे को अच्छा लगा। जो बंदा नहीं जानता मैं लिवरपूल सपोर्ट कर रहा हूँ could probably think that I am against Liverpool. But the narrative, I mean, the show flow was that way where I had to talk about, like एक फ्रेम पे ऑफसाइड दिख रहा था, दूसरे फ्रेम में नहीं दिख रहा था, और पेनल्टी डिसीजन था या नहीं था वो मेरा काम है। सो राहुल, टू आंसर योर क्वेश्चन, I just try to do my job, bro. I just try to do my job to my best potential. That's it. बाकी पब्लिक क्या सोचे, क्या फर्क पड़ता है, bro? नहीं यार, वो तो है ही, मतलब बट या ऑनेस्टली it's a big thing to even be in this position. Um, yeah, so Nikhil, I just spoke about it. Manas, इसके बारे में we have actually done a video We did. of Let's Dybala. just get a beer on it. हाँ. हाँ हाँ, तो अब चलो मैं ही आंसर कर देता हूँ दोबारा ये सेम क्वेश्चन। यार आई डोंट थिंक निखिल Dybala to Liverpool has any legs. That I think Dybala, the kind of player, the kind of जैसा वो player है, जैसा वो जैसे क्लब हम हैं, आई डोंट थिंक डिबाला पे यार वैसा प्लेयर ही नहीं, वो प्रेस वैसे ही नहीं कर पाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता यार लिवरपूल आने का। ये आई थिंक डिबाला का चांस सबसे ज्यादा है कि वो इटली में ही रह जाए। आई इवन थिंक दैट ही कैन इवन गो टू स्पेन एट अ क्लब। व्हाई नॉट बारसा? मे बी बारसा मेक सेंस फॉर डिबाला। आई डोंट नो, अगेन मैं यार बारसा फैन हूँ नहीं, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा बारसा के मैचेस, तो शायद मैं गलत बोल रहा हूँ उसका स्टाइल के बारे में। बट आई थिंक उसका इंजरी इश्यूज है, क्लॉप के सिस्टम में डिबाला तो सेट नहीं हो पाएगा यार, मतलब आई वो डोंट थिंक भाग ही नहीं कोई पाएगा सेंस वो बनता हमारे, है डिबाला। वो भाग ही नहीं पाएगा हमारे सिस्टम में। I hope Atleti doesn't let Pep think about our front line during the halftime. अब फ्रंट लाइन तो अभी काफी अलग हो गया है। Minamino, Origi are 6th and 7th choice now, so काफी चीजें have changed.
Speaking of sixth and seventh choice, Nidhi Origi, Yes. the end is Speaking of, near. Acha, by the way, this is almost prophetic. What just happened? You said, you said speaking of sixth and seventh, and the next word that came off your mouth was Origi. So this is not the only sixth and seventh he's associated with. Let's hope there's a seventh he's associated with. But Yeah, yeah, but yeah, यार Origi का यार honestly the end is I near, Nidhi. ऐसे लग रहा है कि मतलब वो the last dance of Origi is upon us. and it makes sense यार. Look, if you take the emotion aside of outside of Liverpool, ये World Cup year है. He will want to play regularly. So I think obviously it makes sense for Origi. By the way, Satvik, we have predicted this. We have predicted that Origi has one more Divock Origi moment remaining. मैं predictions नहीं करता हूँ, but पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है it is going to be at Etihad against Man City. ये मेरा prediction है. For all you know ऐसा नहीं होगा. बट एक है मोमेंट बचा हुआ ओरिगी का. एक 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 कुछ तो करेगा वो जाने से पहले. Hmm. बट इट मेक्स सेंस यार. इट मेक्स सेंस फॉर ओरिगी टू मूव ऑन बिकॉज यहाँ पे वो ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एंड अभी भी यू नो 24-25 साल का है यार, और मेरे को ये समझ नहीं आता, अभी भी 25 साल का है वो, आई थिंक भाई। एग्जैक्टली. ओरिगी मतलब, कैन वी लूज टू सिटी ट्वाइस, इज इट इवन पॉसिबल यार? एक तो पक्का। राहुल देख, मैं यही बात कर रहे थे हम लोग 10 मिनट पहले, कि हम लोग इतना सोच रहे हैं ना कि क्वाड्रुपल क्वाड्रुपल पॉसिबल है यार, हम लोग दोनों हारे सिटी के अगेंस्ट, और इसमें पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। एंड राहुल, तेरे को नेगेटिव भी नहीं बोल रहा, मैं खुद भी नेगेटिव नहीं हूँ। पॉसिबिलिटी, हम ये नहीं बोल रहे कि होगा ऐसे। रियलिटी ये है कि एतिहाद पे सिटी को हराना मुश्किल है, एंड वेम्बली पे obviously the odds are slightly better because it's a neutral venue. Our fans are, not going to say way more passionate, but our fans are very passionate and we know how to rile up the opponents and back our team. So मेरे हिसाब से उधर थोड़ा chances better है। But हाँ भाई, मतलब ये दो गेम could define a season for the good or for the bad, मैं सिर्फ ये बोलूंगा। और अगर हम लोग hypothetically we lose the games, there's nothing to be ashamed about when it comes to our team. Our team has competed on a great level. We have fought right till the end, and we will, even if something doesn't go our way in these games, we will fight till the end. Jurgen Klopp ने बार्सिलोना के सेकंड लेग के पहले बोला था कि that if we lose in the most beautiful way. Some paraphrasing, like we'll go down the most beautiful way. So Rahul, I think we should be positive. Whatever happens, we will give it our best. Win, draw, loss, we will be good, bro. हाँ भाई, मतलब अगर if we निधि if we reach the final तो कुछ करना पड़ेगा भाई। Menace the Monk from गे फरी आईफिल टावर के सामने। आईफिल टावर पे खड़े होके वो विक्टर ओर्ता था ना लीड्स वाला. उसने वो बाइनोकुलर्स लेके आया था ना, उससे देखना पड़ेगा. आई विश यार. आई विश वी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश वी गेट टू द फाइनल. दैट इज द नंबर वन थिंग. बट यार इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. रियल मैड्रिड के बारे में कुछ बोलो. क्यों ऐसे खेली मैड्रिड यार? मैंने जितना देखा ना, आई थिंक कार्लो एंचेलोटी गॉट हिज tactics absolutely wrong. Um, Playing Modric as the false nine, playing, playing क्रूज क्या कर रहा था. और मतलब पोजीशन ही बहुत सारे प्लेयर्स का आउटपुट, इम्पैक्ट जो भी बोलो, अ, उसके वजह से वेरी डिफिकल्ट टू फॉर देम टू डू एनीथिंग इन द गेम. एंड एंड उसके एंड बारसा, ऑनेस्टली यू नो व्हाट, बारसा डिजर्व मोर क्रेडिट. दे जस्ट सिंपली were better. They wanted it more compared to Real Madrid. That's, I think, the basic fact. And plus Real screwed up their entire game plan. So I think those are the reasons ऐसा क्यों खेली Madrid. um, I think ये गेम उनके लिए प्रायोरिटी भी नहीं था. Very very honestly speaking, imagine saying that about an El Clasico.
बट आई थिंक वो बैक ऑफ द माइंड उनको वो प्रायोरिटी भी नहीं लग रहा था. व्हाट डू यू थिंक, यार मनु? मैं जब घर आया ना, मैं तो एफए का प्रेजेंट कर था, मैं जब घर आया तो 4-0 लीडिंग था. हाँ. तो मैं बता नहीं सकता, बट बारसा वाज लाइक very confident. The way they were passing the ball was just so different compared to what we've seen in recent या. years. Uh, but तूने सही बोला यार, मतलब Real Madrid are still going to win the league यार. Real Madrid are still in the quarterfinal of the Champions League, so they are in a good place. Uh, I mean, of course, ये defeat बहुत बुरा लगेगा उनको, दिल पे लगेगा, but बहुत कुछ है आगे सीजन में Real Madrid के लिए to look forward to. Manas, what about Oxlade Chamberlain's future? He was obviously not happy yesterday Done, when he he's was done. substituted. हो गया I think उसका, it's done. खत्म हो गया. Like जब भी if you saw जब गोल भी मारा ना, बेंच पे कैमरा गया था एंड फेबिनो उठ के ताली मार रहा. फेबिनो सेलिब्रेटेड क्वाइट अ लॉट. म्यूटेड सेलिब्रेशन फ्रॉम एलियट, एंड चेम्बरलिन से तो कुछ रिएक्शन ही नहीं था. और जब चेम्बरलिन सब्स्टिट्यूट भी हो रहा था, चल ठीक है, ही वाजंट हैप्पी. लाइक वो एंग्री था कि यार मेरे को क्यों निकाला, बट चार सब्स्टिट्यूट था, ऐसे नहीं कि सिर्फ चेम्बरलिन को सब्स्टिट्यूट किया ना वो मोमेंट पे. चार सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, Hmm. विच गोज टू शो कि क्लॉप ने सिर्फ चेम्बरलिन को टारगेट नहीं किया, वो चार प्लेयर को निकाला वो टाइम पे. और एंड निधि, तू और मैं व्हाट्सएप कर रहे थे एक दूसरे को, लाइक हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट द ग्रेटेस्ट यार, मतलब. एंड इट इज बिकमिंग अ कॉमन ट्रेंड नाउ. Oxlade is done यार. उसका injury के बाद he's not the same player. Um, I think it's very clear that younger players, better players are ahead of him in the pecking order. I think for his sake also it's better if he moves on. I like Oxlade Chamberlain. I think he's given us some absolutely brilliant moments. Yeah. But I think his time as a Liverpool player, unfortunately, is over. So Pep Fraudiola says, as you guys have been to Kiev, please make a video on how to get to the final tickets and the logistics of reaching a CL final. From Paris down to Paris. यार देख, पेरिस पहुंचना तो बहुत सिंपल है. टिकट बुक कर, शेंजन में. कीव कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज कीव मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट उसका भी कंट्री टू वीडियो गेट. बनाया हम लोगों ने, कैसे हाँ. पहुंचे हम लोग. कीव उस टाइम में भी पहुंचना वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. और अभी तो मतलब ऑब्वियसली ईस्टर्न यूरोप इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी प्लेस टू गेट टू. समवन इज स्लीपी, right? So obviously, Eastern Europe is not going to be an easy place to get to. But Paris तो सिंपल यार. फाइनल का टिकट्स मतलब अगर तुमको पता चलता है तो हमको बता देना कैसे मिलता है. हाँ. मैं यही हाँ. बोल रहा हूँ. मैच टिकट का क्या है ना, पेप पेप जी, आप तो काफी चैंपियंस लीग फाइनल्स पहुंचे हो, खुद जीते भी हो. चैंपियंस लीग फाइनल का टिकट ना बहुत लक पे होता है. और जब भी हम यूक्रेन गए थे मैच देखने के लिए, तो यार तभी हम वी ओवर पेड क्वाइट अ लॉट टू गेट द मैच टिकट्स. निधि तो रियल मैड्रिड के एंड में बैठा हुआ था टू वॉच द गेम. there was मैं there was no Real Madrid section in Kiev, by the way. वो बट पूरा वो स्काउटर. टेक्निकली रियल मैड्रिड एंड में था, बट हमने सबने बहुत ओवर पे किया था. अगर फेस वैल्यू अगर 500 रुपए का टिकट था, हमने वी कुड से कि 350 400 रुपए रुपए दिए थे, अगर फेस वैल्यू की बात करें तो. वी पेड क्वाइट अ लॉट टू वॉच द गेम. बट इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ फाइनल का टिकट, बिकॉज एलोकेशन ही 20-30 हजार होता है, 30-40 हजार होता है. 30 ज्यादा से ज्यादा होता है पर टीम. और सीजन टिकट होल्डर ही आपके उतने हैं यार, उससे ट्रिपल होंगे डबल होंगे, तो कैसे मिलेगा टिकट? बहुत बहुत मुश्किल है. हाँ भाई, मुझे भी जानना था आप लोग कैसे गए एनफील्ड. एक एक बार बताओ ना एक्सपीरियंस यार. वीडियो है अपने चैनल पे. मतलब you can have a look. What you can do is just go through our channel, and it's the second video on our channel. यार This one. आपको बहुत How स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे. हाँ, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, लेकिन बट आप कर सकते हो. और आपको पता चल जाएगा कि हमारा एक्सपीरियंस क्या था. हाँ, सो uh, हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि हाउ टू रीच देयर
फ्लाइट टिकट्स का कितना है, किधर रह सकते हो, वीजा का क्या है, सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है कि आप एनफील्ड कैसे जा सकते हो। मैच टिकट्स के बारे में भी बोला है, सो प्लीज डू चेक इट आउट, इट्स इन आवर बायो। जूड बेलिंगम और फाबियो कार्वालियो, हु विल सेल दिस समर? देख, आई थिंक फाबियो कार्वालियो तो 5 मिलियन में मिल रहा है, और जूड बेलिंगम अगर लेना है तो उसको 70 मिलियन और देना ही पड़ेगा। सो मेरे को नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन जायज है, बिकॉज Fabio Carvalho apparently A is a done deal, and even if it's not, उसको खरीदने में we are trying to sign him from Fulham and he's out of contract at the end of the year. Jude Bellingham will be, he is hot property and it's going to cost way more. So knowing Liverpool, मेरे हिसाब से हम फैबियो कार्वालियो ही साइन करेंगे, बिकॉज फैबियो कार्वालियो काफी सस्ता है निधि। अगर एक साइन करना होगा तो शायद से हम फैबियो कार्वालियो करेंगे निधि। I think Jude Bellingham has the kind of player he is, the profile is. He's moved beyond the kind of buys that we do. जूड बेलिंगम मुझे नहीं लगता है कि हम साइन करेंगे, एंड अगर जूड बेलिंगम साइन करना है तो वन मेजर प्लेयर विल हैव टू लीव. दैट्स व्हाट आई थिंक So, अबाउट जूड बेलिंगम. so true. Rahul says, why are we not using Connor Bradley as right back? Maybe Neko will be the backup next season. Yeah, Rahul, जो गोमेज को चांस देना है ना. मतलब जो गोमेज इज वन ऑफ आवर फर्स्ट टीम प्लेयर्स. He was instrumental in winning us the league, along with Van Dijk. And Joe Gomez को चांस देना जरूरी है, because he will also be thinking about his future. No, I know this season is like sort of, it's a season of flux for him. उसको थोड़ा चांस कम मिलने वाला था वैसे भी, बिकॉज वो बहुत सीरियस इंजरी से वापस आ रहा था. कॉनर ब्रैडली को हमने चांस दिया लीग कप में और उस तरह के कॉम्पिटिशन्स में, बट अभी मामला बहुत सीरियस हो गया है यार. मतलब अभी क्वार्टर फाइनल खेले हैं, सेमीफाइनल में पहुंच गए, तो जो गोमेज को चांस देना जरूरी था, ऐसा मुझे लगता है. ऑनेस्टली आई थॉट जो गोमेज वुड बी सेंटर बैक. मुझे लगा था कि कल वैन डाइक को रेस्ट करेंगे, बट नहीं किया. एंड क्लॉप समथिंग दैट ही कैन डू. That's because बट मिलनर 100% फिट नहीं था निधि, मेरे हिसाब से। हाँ, अगर मिलनर 100% फिट होता ना तो वो राइट बैक खेलता, गोमेज सेंटर बैक खेलता। बट ये भी है ना, अभी इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है तो खेल ही लो, वैसे वाला सीन था। एंड बाय द वे गाइस, 67 लाइक्स, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर और है हम लोग, अगर आप लोग 100 लाइक्स करवा दो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे लाइव पे। मैं और निधि कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि लाइव करे कि नहीं, क्योंकि मंडे है, पब्लिक आएगा कि नहीं, और 41 पीपल अभी देख रहे हैं, सो थैंक यू सो तो मच। थैंक यू सो मच. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो यार, 100 लाइक्स कर दोगे तो शायद से यूट्यूब हमें और लोगों की तरफ स्प्रेड कर दे, हमारा एल्गोरिथम थोड़ा बेटर हो जाए। And if you have not subscribed to Menace in the Monk, please do subscribe to Menace in the Monk. निधि, ये प्लेयर के, ये जो नीचे कमेंट है, ये प्लेयर के बारे में कमिंग. बहुत बातें हो रही हैं। वो मोनाको के लिए खेलता है। He was very good against PSG yesterday as well. They beat PSG 3-0 if I'm not wrong yesterday. So uh, what are you making of this guy? देख निधि, because मेरे को ये भी लगता है कि नाबी केटा का टाइम भी ओवर हो रहा है। कल नेविगेटर Because बहुत एवरेज था यार. वही कल मतलब क्या बहुत था। एवरेज था यार. नेवी पता है इतना फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है मेरे लिए? क्योंकि मतलब उसकी क्वालिटी इज नॉट क्वेश्चनेबल. The quality that Navigator has is not questionable at all, right? But उसका पता नहीं क्यों he has a game where he frustrates. मतलब कल भी उसने इतनी बार बॉल ही gave away. Thankfully his attitude is the best. Chaumini, by the way, we did another video about transfer targets in the summer, which you can find on our channel. इसमें there is a very regular guy on our channel who's very good with analysis and all, Ritvik. He mentioned Chaumini as you know an option that we Yes. should be looking at. Yeah. Sorry. Bless you. Bless Now, you. um, the thing is, चाउमीनी पता नहीं यार. लुक, ऑनेस्टली मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आई डोंट वॉच द फ्रेंच लीग, सो आई मैंने भी हैवंट इसको सीन ज्यादा चाउमीनी. देखा नहीं है निधि, मैंने भी नहीं देखा हाँ, है इसको ज्यादा। मैंने देखा नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, he fits the kind of play that we have. But let's see what happens.
बिकॉज अभी मिडफील्ड पब्लिक काफी पैक्ड है, मिडफील्ड काफी पैक्ड है, सो इंटरेस्टिंग होगा मिडफील्ड में किसको लेना है क्या नहीं लेना, बिकॉज कल एलियट भी खेला, he was rotating विद चेम्बरलेन, वो चेम्बरलेन इंटरचेंज कर रहे थे, कॉर्टिस को भी ज्यादा गेम टाइम मिलता नहीं है, हेंडरसन ने साइंड अ न्यू डील, मिलनर आई डोंट नो वेदर ही साइंस अ न्यू डील और नॉट, तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है। पब्लिक हमेशा आएगा भाई, आवर फैमिली इज ग्रोइंग, यस राहुल, थैंक यू भाई, अप्रिशिएटेड योर सपोर्ट ऑलवेज, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, ऑलवेज अप्रिशिएटेड, आप हमेशा आते हो, हमेशा कमेंट डालते हो, हमेशा लाइक करते हो, वी रियली अप्रिशिएट इट। 76 likes यार by the way guys, 76 likes, 24 away from 100, शेयर करो 24 यार, away अपने from दोस्तों को 100। भी बुलाओ। लिवरपूल फैन है तो अगर मतलब गालियां भी देनी है, इफ एनीवन वांट्स टू डिस्कस लिवरपूल, हाउ कैसे हम लकी हैं, वो भी कर सकते हैं यार, बुलाओ अपने दोस्तों को। लिवरपूल वी लव इट। चलेगा, बात we'll have a debate on लिवरपूल as well। When are you guys collaborating with Craig from Anfield Agenda? We try to collaborate with as many people as possible यार। uh, करेंगे, वो भी करेंगे, बट अभी तो यार मतलब अपना इंडियन कम्युनिटी थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, उसको अच्छा और स्ट्रांग हो तो और अच्छा लगेगा हमको। तो अभी तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, बट या क्रेग इज समवन वू डेफिनेटली वांट टू कोलैबोरेट विद, तभी लाएंगे। um, LJ says for this level of success we need cooperation of many things around us. um, क्या बोलता है मानस? Of course we do, and I think we have seen that already. I mean, I think In our what dressing angle? What room, does this comment mean? I don't get it. Like I think what he means is, and again, I think what he means is, uh, quadruple. he, for us to be in this position, a lot of people have contributed and not just the team, I think. I have no idea what he means. He's talking about the quadruple. He's talking about where we are right now. So, your thoughts on Jamie Carragher comments on Chelsea, and can Real Madrid sign their players and their manager? Yeah. Miss First of all, Mr. Nair, I think you're a Dortmund supporter. Uh, yeah, there's a bit of truth in what Carragher is saying. He is linked Tuchel with Man United and probably with Real Madrid as well now. So uh, you have to understand he has a job to do as well, and he does that very well. If you ask me, that's all I'm gonna say. समझदारों को इशारा काफी है. I think he's a good pundit. He's a very good pundit. His analysis are good, but I think he has a job to do and he does it really well. यार वो ही वो basically is directing clicks to Sky Sports and is doing a good job, let's be honest, but okay. Your thoughts on Ten Hag as a manager, Manas? I think is amazing. Yeah, very good guy. In 2019, when we won the Champions League, he got Ajax to the semi-final. He lost important players in Frankie de Jong and De Ligt. Cycle renew हुआ. They reached the round of. They should have beaten Benfica. I mean, in all honesty, if the draws had worked that way, probably would have been facing Ajax in the quarterfinal. But anyway, but the way they play, the way they uh, have the youth system, and the way the man has stayed loyal as well, even when they had reached the semi-final in 2019, he had offers from bigger clubs, but he stayed at Ajax, and he's still at Ajax, and he's doing a good job. So, मेरे हिसाब से he's a good guy, he's a good manager, he's someone you can build your team around for a longer period of time. Like I'm not saying he's Jurgen Klopp, but he's in the Jurgen Klopp mold. He's not a short-term solution or fix. If you want to hire Eric Ten Hag, it's a process, it's a project, and he's at the right place at the right time, right now. I don't know where he goes from here, but मेरे हिसाब से he should stay there for a bit. Yeah. I think I think United are targeting Eric Ten Hag as a manager. आज आज कौन वो बोल रहा था, कोई ग्रुप पे डाला, मेरे किसी ने ग्रुप पे डाला कि यूनाइटेड सिमोन इंजागी को टारगेट कर रहा है, जो इंटर मिलान का कोच है। interesting.
Hmm. Why is Simicas not getting match time? Because we have the best left back in the world here. That is the soul and whole and soul reason, I think. And Simicas, we are lucky enough to have a guy who does his job, doesn't complain. मेरे को सिमिकास का बिहेवियर इतना अच्छा, मतलब उसका जो उसने जो एफए कप जीत सॉरी कैराबाओ कप जीतने के बाद जो मतलब किया ना, आई वाज सो हैप्पी लुकिंग एट हिम. He didn't play a minute, right? And he still celebrated like he was the one scoring the winner. Hmm. We are we are again, I'm sorry, मैं थोड़ा फिर से अंकल मोड में जा रहा हूँ, but we're blessed to have a team like that around us here. I mean, basically बहुत सही था यार. नहीं नहीं, आई टोटली एग्री कि सिमिका जैसे लाइक ही इज अ ग्रीक इंटरनेशनल, आई थिंक लास्ट ईयर वो ग्रीक प्लेयर ऑफ द ईयर जीता, एंड ही स्टिल is okay coming off the bench and contributing the way he is. वैसा अगर राइट बैक ऑप्शन मिल गया ना भाई, देन वी आर Hmm. फ्लाइंग, ऑनेस्ट Yeah. ओपिनियन. लाइक आज आज अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल मैटेप या वैन डाइक को रेस्ट करना है, वी नो कोनाटे आएगा एंड कर सकता है. वी नो अगर रॉबो को रेस्ट करना है, वी नो फॉर अ मैटर फैक्ट सिमिकास कर सकता है. अगर एलिसन को रेस्ट करना है, अनअवेलेबल है, तो केलेहर आ सकता है. आगे ऑप्शन है, मिडफील्ड में ऑप्शन, राइट बैक का ही स्ट्रेस है. तो अगर ऐसा मिल जाए ना, और अभी निको विलियम्स आई एम वेरी हैप्पी ब्रो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी द वे ही इज प्लेइंग, वेरी वेरी हैप्पी. So the song I'm going to dance on is "Free from Desire." You heard it here first. Man and sense is purified, free from desire. Man and Yeah. sense is purified, free from desire. Man and sense is Sanya Mai, purified, free from desire. Boom. La 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 la. Sorry, yes. Sanya Mai is going to has asked if are Chelsea going to be in better form and more motivated given their current situation. I think yes. I think the short answer is yes. Look, जो भी चेल्सी के आसपास हो रहा है ना, whatever is happening around Chelsea, their manager and their players have been incredible. You've got to give them credit. Kai Havertz is a 21, 20, I don't know his exact age, but he's 21, 22 years old, and he's saying कि यार मैं अपने pocket से I'll pay for the travel and all that. That's an incredibly mature thing to say, right? And They are more usually we united right say, now. yeah, we see all these footballers, a lot of them acting, uh, I don't know, entitled maybe. Um, I think that when you have that siege mentality, us against the world, that can be an excellent motivator. So I think the short answer to your question is yes. I think they're going to be better than what they were. And by the way, this is a team that is third in the Premier League. So a lot of, I mean, if you are a Chelsea supporter, then I think you should take a lot of heart in how your team has stood up to the challenge. Honestly, your team, your manager, And but even as a Vinny, neutral. कल का मैच देखने के बाद दे विल फील प्रीटी कॉन्फिडेंट अगेंस्ट रियल मैड्रिड. लाइक जो जो Yeah, कल yeah, हुआ, yeah. लाइक they will, and let's be honest, sorry Machar, let's be honest, they've gotten Palace in the FA Cup, so they will fancy themselves कि भाई हम लोग फाइनल में पहुंच सकते हैं. और फिर रियल मैड्रिड जैसे खेला Thank कल, you so तो much, Mohammed. मेरे हिसाब से दे विल फील स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट कि शायद से हम चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में भी पहुंच सकते हैं. सो चेल्सी could win a trophy man this season, so a lot to be positive about when it comes to Chelsea. 90 likes हो गए, सिर्फ 10 और कर दो, हम बहुत खुश होंगे हमारे लाइफ के साथ. 53 यार मिनट्स ये हुए हैं भाई और बहनों, हाँ 53 मिनट्स हुए हैं. 60 मिनट्स के पहले 100 लाइक करवा दो, हम बहुत खुश होंगे. अगर आप यार 150 ये करवा आई दो, दैट मींस लिवरपूल क्वाड्रुपल जीत रहा है. अगर आप नेक्स्ट 6 मिनट पे 150 करवा दो, तो हम क्वाड्रुपल जीत. 95 हो by गया, the way, नहीं बोलते बोलते 95 हो गया. by the way, I'd like to answer this question. Why people say Liverpool has the most toxic fan base? यार देखो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या है ना, इसका आंसर थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा तुमको. हम लोग ना 30 साल से लीग नहीं जीते थे. एंड इन एनी फुटबॉल कॉन्वर्सेशन क्या होता था ना कि when you were any time you were talking to a Liverpool supporter about anything, Liverpool, Gerrard, anything,
The one comeback used to be key, but how many Premier Leagues have you won? Right? वो छिन गया लोगों से 2020 में. वो कमबैक लोगों से छिन गया. दैट्स लाइक यू स्नैच्ड अवे द मोस्ट फेवरेट टॉय ऑफ अ चाइल्ड. वो हुआ रियलिटी में. क्योंकि दैट यूज्ड टू बी द परफेक्ट कमबैक फॉर एब्सोल्युटली एवरीबडी हु इज नॉट अ लिवरपूल सपोर्टर टू थ्रो बैक एट अ लिवरपूल फैन दैट यू नॉट वन द लीग फॉर 30 years. नॉट टू मेंशन कि मैनचेस्टर सिटी 44 years नहीं जीता, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्लब्स जो उससे ज्यादा लंबा उन्होंने वेट किया है. बट दिस वाज अ comeback that got taken away from them. But there is also the rise of the social media fan base, and there is a rise of the social media fan that feels entitled. And I'll be honest, there are a lot of those Liverpool supporters as well who feel entitled, who act entitled, and they ये मुझे लगता है कि टॉक्सिक फैन बेस ना, ये सोशल मीडिया ड्रिवन थोड़ा है. अगेन, नॉट शोइंग ऑफ, बट मैं लिवरपूल गया हूँ, मानस लिवरपूल गया है. स्काउजर्स आर genuinely one of the best people to be around, unless you act like an asshole, right? uh, Toxic fan base, yeah, I'm sure that every club has a part of it that is toxic, right? And depending on who you are, you would think that I am the other person is more toxic. But I think what happened was that people hate us a little bit more because 30 साल लीग नहीं जीते थे, अचानक जीत गए, तो वो लोगों का जो फेवरेट कमबैक था ना, बट हैव यू वन द लीग, वो उनके हाथ से छिन गया. तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है. दैट्स द रियलिटी. इट्स लाइक योर cousin who always mocked you हाँ, that you didn't have a job, and suddenly you landed a job or started a business and you're doing better than him. हाँ, उसको चुभेगा ना कि बट तुम तो मतलब नहीं कर पाते थे कुछ. वो रीजन है, मुझे ऐसा लगता है. But yes, there is that social media entitled fan that also fuels this. 100%. I totally agree with what you're saying. By the way, 103 likes, everyone. Thank you so much. 103 like हो गए on our stream. That is one of our best ratios when it comes to me and Nidhi doing it all alone. Obviously, जब भी हमारे पास लोग आए हैं साथ में तो सपोर्ट तो मिलता ही है. बट फॉर यू गाइज टू स्टे विद अस फॉर सो लॉन्ग एंड हमें इतने सारे लाइक्स मिले हैं भाई, वी रियली रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच एवरीवन. एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, करंट बार्सिलोना वर्सेस करंट लिवरपूल प्रेडिक्ट स्कोर लाइन. भाई ये बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऑनेस्टली. मानस, तू तू बोल यार, मैंने बहुत बोला अभी लास्ट 2-3 मिनट. यार देखो, जीतने तो लिवरपूल ही वाला है. मतलब द पॉइंट ये है कि कितने से, सिर्फ यही क्वेश्चन है. हु इज द बेटर गोलकीपर? एलिसन. बेटर सेंटर बैक्स लिवरपूल के पास है. बेटर राइट बैक, लेफ्ट बैक किसके पास है? लिवरपूल. बेटर डिफेंसिव मिडफील्डर लिवरपूल. तुम्हारा खुद का स्टार प्लेयर जो तुम मानते थियागो हमारे पास है. फ्रंट थ्री किसके पास बेटर है? हमारे. देयर इज नो वे बार्सिलोना की करंट टीम कैन beat Liverpool, but Barca, having said that, Barcelona have improved quite a lot जावी के अंडर, और वो हम क्रेडिट दे रहे हैं. ऐसा ये नहीं बोल रहे कि बार्सिलोना कुछ नहीं है या कुछ नहीं होगा, आगे जाके कुछ बदल नहीं सकता. बट फिलहाल लिवरपूल अलग प्लैनेट पे है. ये वही बात होगी कि अगर मैं आपको पूछ लूं कि ब्रेंडन रॉजर्स का लिवरपूल जिसका सीजन अच्छा हो रहा था वर्सेस पेप गार्डियोला का बार्सिलोना, ये या फिर जो भी लुइस एनरिके जो भी था तभी, लाइक नहीं हो, ये कंपैरिजन गलत है. फिलहाल लिवरपूल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड है, वो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा लिवरपूल को. बार्सिलोना इज going through a process. Let's hope they develop the way they want to. That's all I'm going to say. But अगर आज two-legged affair होगा, it is going to be very comfortable, man, for Liverpool. This is what I feel. Yeah, James, this is a valid point. This is a very legitimate thing you said. ये वाला लाइव ऑनेस्टली हम लास्ट मोमेंट तक डिस्कस कर रहे थे, करें नहीं करें. मंडे है, लोग आएंगे नहीं आएंगे. बट डोंट वरी, वी विल प्लान इट बेटर. वी विल हैव मोर more planned sessions.
coming in, more collabs. James Hunt, bro. साहिल says मैं मैड्रिड फैन हूँ बट लिवरपूल मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि लिवरपूल की वजह से मैंने ड्रीम 11 पर 1 लाख रुपए जीते हैं, स्पेशली हावी एलियट. वेरी गुड यार, इसकी माँ, कॉन्ग्रेचुलेशन. आई होप. साहिल आप बता, थोड़ा डिस्क्राइब करो आपने 1 लाख रुपए कैसे जीते ताकि हम भी जीत सकें. लाइक 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा. साहिल प्लीज डिस्क्राइब करिए कि आपने 1 लाख रुपए कैसे कैसे जीते. सिटी वर्सेस लिवरपूल. हाँ यार साहिल बताओ यार, हाँ, ताकि हम भी जीते. सिटी वर्सेस लिवरपूल का वॉच अलोंग करो ना इफ पॉसिबल. यार राहुल, वॉच अलोंग ना, मैं एक बात बोलूं. पेप इज आल्सो सेइंग दिस बाय द वे. यार मैं एक बात बोलूं, वॉच अलोंग के साथ दिक्कत क्या है ना कि वो, मजा यार नहीं वो आता आई यार डोंट, मैच का. मजा नहीं आता. एंड आई डोंट बिलीव इन रिकॉर्डिंग योर, मतलब दैट्स नॉट ऑर्गेनिक ना. मतलब यू नो देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट. Look, what I would like to do is, for example, um, Manas and I or more of us are in the same place and हम बस एक कैमरा लगा दें and let things happen organically. वो फिर भी मजेदार होगा. What something like an Arsenal fan TV does. वो I think हाँ, will be fun. But वो watch कोविड along टाइम्स में करेंगे. जो जो हम लोग ने किया था. हाँ, बट करेंगे यार, ट्राई करेंगे. जूम वॉच अलोंग कैराबाओ का फाइनल का वी डिड इट विद एंडी कॉप. बट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना उसमें, मतलब व्हाई डू यू वांट टू लिसन टू अस, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू लिसन टू द कमेंट्री, ऐसा मुझे लगता है. नहीं, और वो तो हम, ठीक है, दूसरे का तो जाने दो, दूसरे शायद वुड वांट टू वॉच अस निधि, बट वी वुड रादर लाइक हैव आवर ट्रेडिशंस एंड डू आवर ओन थिंग एंड वॉच द गेम. इन ऑल ऑनेस्टी वॉच अलोंग का वही स्ट्रेस है. मैं हम लोग निधि और मैं ये बहुत बात की, हम ये भी जानते हैं कि वॉच अलोंग हमारे चैनल के लिए शायद से बहुत ग्रेट होगा. शायद से हमें सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, न्यू व्यूज नहीं मिलेंगे, बट एक कॉस्ट भी होता है ना. अल्टीमेटली हम लोग वीडियो बना रहे हैं बिकॉज वी लव लिवरपूल. you know we are watching football because we love football. We are not making videos because we want to make videos for the sake of it. So इसलिए हम वो नहीं कर रहे. मैच के बाद आएंगे यार, बात करेंगे, जीते तो जीते. sort of a light question, do you think the yellow jersey looks hideous? यार तनीश, मेरे को अच्छा लगता है. so I own a lot of Liverpool jerseys. um, so this cupboard that you see behind me is full of Liverpool jerseys. मैं just एक पीक दिखाता हूँ आपको. इसकी ये माँ का सिर्फ ये जर्सीज क्या है. है? ठीक अच्छा. है, ये सिर्फ जर्सीज है मेरे पास, लिवरपूल जर्सीज. द पॉइंट इज जर्सीज ना, दे आर एसोसिएटेड विद द मेमोरीज वी मेक इन देम. फॉर एग्जांपल, जब हम जब हमने वो ऑरेंज वाली जर्सी निकाली थी, वो आरएसएस वाली, तो पीपल डिडंट लाइक इट, राइट? हाँ. People did not like that jersey. Right now, you try finding that jersey on any eBay site, anywhere, you won't find it because we performed. We were at our, scoring best in that jersey everywhere, हाँ. है ना? तो हाँ. यार jerseys मुझे ऐसा लगता है ना कि it has to do with a lot of it has to do with a lot of memories we make in those jerseys. या. तो अगर हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि अगर हम एक टाइट मैच चल रहा है जो 1-1 चल रहा है और एलिसन ने वो गोल मार दिया या किसी ने ऐसा एक गोल मार दिया, अम, तो तो और हमने वो येलो जर्सी पहनी है वो मैच में, तो वो जर्सी आइकॉनिक हो जाएगी. या. अब जैसे वो जो क्रीम जर्सी हमारी अवे वाली है और ग्रीन कॉलर, वो इट एसोसिएटेड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनल अवे जो अपन जीते थे. इसलिए मैंने वो जर्सी खरीदी फैबिनो के नाम के साथ. लाइक आई एग्री विद निधि की फीलिंग, इमोशन, इंसिडेंट एसोसिएट हो जाता है जर्सी के साथ मेरे को. बट मेरे को इन ऑल ऑनेस्टी येलो जर्सी बुरी नहीं लगती, बिल्कुल बुरी नहीं लगती. मेरे को वो फर्नांडो टोरेस टाइम, फर्नांडो, देखो पता है मेरे को येलो जर्सी किसकी याद दिलाता है निधि, तो गैस कर सकता है. मैंने सी जावियर येलो, लोंजो. नहीं, मैंने सी येलो लिवरपूल जर्सी, मेरे को एंड्रे वॉरेन की याद आती है. आउट ऑफ ऑल द पीपल ब्रो, मेरे को एंड्रे वॉरेन की याद आती है भाई. पता नहीं क्यों मेरे को वॉरेन की याद आती है येलो जर्सी देख के भाई. How was your both reaction when Messi scored that free kick in the first leg? यार आई वाज, मतलब मानस तो प्रेजेंट कर रहा था, आई थिंक. आई तो वाज जस्ट इन ऑ. आई वाज लाइक यार, you can't stop this. Look, yeah, Raj,
मेसी को लोग बहुत ट्रोल करते हैं। मेसी के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब वो पीएसजी गया एंड पीएसजी यूसीएल से बाहर हो गया एंड ऑल दैट, या फिर इसके पहले भी बारसा हैड देयर स्लिप अप्स। व्हाट यू कैन नॉट डिनाई is that we're privileged to watch Leo Messi play football in our lifetimes. Whatever club you support, and again, this is not just true for Leo Messi, this is true for Mohamed Salah, this is true for Cristiano Ronaldo, this is true for absolutely everybody. Yeah, so wo, and again, without drifting too much and talking about it, Leo Messi is an alien here. He's a fantastic footballer. There is nobody, how can you possibly doubt that as a football fan? So वो गोल देख के तो मुझे यही लगा कि यार अमेजिंग, मतलब दिस इज लाइक अनलेवल, अनरियल, एंड एलिसन नियरली स्टॉप्ड इट, but it was that free kick was so good that nobody could stop it. So I was Who just in awe. posted that, Nidhi? What was the name of the person who posted it? Raj, Raj. So Raj, I just want to say that लाइफ में लिवरपूल को देखा है चैंपियंस में इधर उधर, फ्यू चैंपियंस लीग फाइनल्स एज वेल, फोर इन फैक्ट आई थिंक, 05 07, then the one against Real Madrid and Tottenham. चार चैंपियंस लीग फाइनल्स देखे, चैंपियंस लीग मल्टीपल गेम्स देखे हैं राज, बट जब भी मेसी हैज प्लेड अगेंस्ट लिवरपूल ना, द फ्यू टाइम्स, जब वो बॉल लेके भागता है ना, जितनी तभी, दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव मेसी, एंड मेरा मेरा वर्ड डजंट मैटर, बट जब मेसी बॉल लेके भागता है ना, तो डर लगता है भाई। इससे ज्यादा डर कभी लगा नहीं है। जब मेसी अटैक करता है ना आपके गोल को अगेंस्ट, एंड एज अ लिवरपूल फैन, it doesn't happen often every season, because luckily it doesn't happen every season, but when Messi attacks your goal as a Liverpool fan, I just want to say that I have not been this scared ever by any player. And Messi is genius. Messi is genius, like Nidhi said. Like, he is uh, Liverpool apart. If there's a player that I would just fall in love with, and I am in love with, it's Leo Messi. Messi is just unbelievable, dude. Like, he's agreed. Messi. Like, he's unbelievable. Manas, this is my favorite question, but I want you to take it up. Not a What? Liverpool fan, but strong feeling है कि this year the Ballon d'Or was Salah and he deserves it. यार डिजर्व तो 2020 में, बिफोर मानस आंसर्स दिस, डिजर्व तो 2020 में लेवेंडोस्की भी करता था, बट वो नहीं दिया ना उसको. आई डोंट थिंक Ballon d'Or is about who deserves it anymore. But again, I don't want to go on this rant again. Manas, you take it up. I'll take it up. I would rather entertain talks or ridiculous talk about Liverpool winning the quadruple than Salah winning the Ballon d'Or. That's the human being that I am. I would talk about. You can ask me a ridiculous question about Liverpool, then about an individual. This is nothing against Mo Salah. And Nidhi and me have been the biggest advocates of कि भाई he should stay with us, he should sign with us, because we love Mo Salah. But मेरे को अभी, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, घंटा फर्क पड़ता है कौन जीते ये अवार्ड। ये अवार्ड है, ट्रॉफी नहीं है। लिवरपूल को कुछ नहीं मिलेगा मो साला जीते या नहीं जीते। एज ए लिवरपूल फैन ना अच्छा लगेगा मो साला जीत गया, माने जीता, कोई भी जीता, वैन जीता, बट भाई वी वांट टू विन, वी वांट हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस इज डिराइव्ड जब लिवरपूल अच्छा खेलता है। दिस इज नॉट I बैडमिंटन, दिस इज टेनिस, I दिस इज नॉट, ये मतलब let's get that out of the system. I don't care about balance or bro. I 110 I likes, prefer 110 likes by I the way, prefer 110 likes. I prefer Golden Boots over Ballon d'Ors. There, I said it. मेरे को नहीं फर्क Cute. पड़ता है बैलोन डियोर. मैं I'll be happy if Salah wins it because we will be known as a club where you can come and win the Ballon d'Or. I know for Salah, for Mane, for anybody it is a big thing, but Yeah. honestly Ballon d'Or मेरे लिए फिल्म फेयर जैसा है. वो यशराज के स्टूडियो में होता है तो तुमको पता है कि जैसे बीच में हो रहा था ना अर्ली 2000s में, वो यशराज के स्टूडियो में होता था तो तुमको पता था कि शाहरुख खान जीतेगा. वही है. अगेन डोंट वांट टू गो ऑन अ रैंट बट Ballon d'Or really don't care.
हाँ मतलब no one cares about, I mean at Uh, least me and Nidhi don't care about Ballon d'Or. Jota दलजीत very मिनास, underrated player. Why, bro? फर्स्ट ऑफ ऑल दलजीत मिनास का नाम फर्स्ट टाइम देखा है, सुना है। सो दलजीत भाई अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे, प्लीज डू सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क यार। 19 गोल मारा है यार ये सीजन निधि जोटा, 19 Yes. ऑलरेडी, 19 भाई, अनबिलीवेबल, यार जोटा अनबिलीवेबल। यार जोटा वुल्व्स के लिए ना बेंच पे रहता था, ठीक है। डियोगो जोटा is, again, it might sound a little preemptive, but Klopp can mold him into the next, dare I say it, Lewandowski, because ये ना बेंच पे बैठा रहता था वुल्व्स पे। सो मतलब इसके साथ जो क्लॉप ने किया ना, दैट इज अनरियल, अनरियल। So, you look at him, and he's your proper fox in the box. Jota is not someone that you associate with a lot of, dribbling and, giving that killer pass. But in the box, he's lethal. You put 5, 6 feet, 5-inch players around him, and he might just win the header because his timing is so impeccable. But So Nidhi, do you think he's Jota more than, is a poacher? Like, is he just a poacher, or do you think he? he's just? No, no, he's more than a poacher. I'm saying that currently he's playing that role in our system. हाँ, हाँ, He's definitely more than a poacher, है ना? तो हाँ। वो तो मैं मतलब डियोगो जोटा इज एब्सोल्युटली अमेजिंग राइट नाउ, द बेस्ट पोर्चुगीज प्लेयर इन द ऑन द प्लेनेट, लेट मी पुट इट दैट वे. Hey, oh, he wears the fake sweatshirt. Anyway, yeah, Jota is, yeah, अभी मतलब, excuse me, like we've reached a point where who to start in the front three, वही दुविधा का विषय है। मतलब, देख यार what do you उमंग, do? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई फील अग्वेरो के लेवल तक पहुंचने के लिए जोटा हैज अ लॉट ऑफ टाइम टू गो. अग्वेरो आई थिंक इज अ प्रीमियर लीग लेजेंड. I think he still has a way to go to get there. Uh, तो बट ही इज ऑन हिज वे. विनीत सेज निधि का किट देख के लिवरपूल बायर्न वर्सेस पूल की याद आ गई. लिवरपूल बोलो यार, प्लीज प्लीज. हाँ, पूल पूल मत बोलो पूल भाई, मत पूल बोलो में यार, इट जस्ट. मतलब ये क्या अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है क्या? हाँ. हाँ। तो होप वी प्ले देम अगेन. या वी होप सो टू. मानस. But I would rather play Villarreal in the semi-final. But anyway, yeah, Nidhi. Aditya Kumar is saying Torres or Suarez. यार ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निधि। देख, फुटबॉलिंग टर्म्स में ना जो जो सुआरेज ने किया ना, मेरे हिसाब से वो अनपैरेलल्ड है। बट टॉरेस was poetry, like टॉरेस और जेरार्ड का जो कॉम्बिनेशन था ना निधि, it was very great on the eye. It just looked beautiful. And so for me, I will go for Fernando Torres. But and don't get me wrong, I'm not discarding what Suarez has done. Like, Suarez is a better player than Fernando Torres. But emotions के साथ अगर मैं बात करूँ तो Fernando Torres. या फर्नांडो टोरेस. यार ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, बट ऑनेस्टली आई वुड से सुआरेज इज द बेटर प्लेयर. Yeah. Provided better moments for us. He's got us off our seats more regularly. That one season he was absolutely insane. Um, but yeah, Denuka says 50,000 views crossed. Congratulations. Thank you so much. And one person has been, asking us to pick it up. If we look at three players who can win the Ballon d'Or as per the current, Salah, Benzema, and Liva. Yeah, I again, मतलब Ballon d'Or पता नहीं, मतलब किसी को honestly भी दे दो we've just यार, किसी को भी दे दो, नहीं फर्क मतलब पड़ता है यार. मतलब give Benzema the Ballon d'Or and give us the Premier League and the Champions League. मेसी I को would दे take दो that वापस, any day. मेसी को दे दो I don't वापस। care. मैं साला का मतलब तुम यार, फर्क नहीं पड़ता यार. तुम पॉग्बा को दे दो ना यार, बट हमको ट्रॉफी, मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. I'll say that about Ballon d'Or.
shows Again, Nidhi people will call me bitter because I don't care about the Ballon d'Or. I do not. ये क्यों? Again, anyway, छोड़ो. I don't want to go on a rant. Unpopular opinion: Bobby is still the best false nine we have. Holding the ball, receiving and turning the ball in deep, only plays where Jordan. Yeah, so Surya. Surya, I totally sorry, Nidhi, I'm taking this. Surya, I totally agree with that. But yesterday's game, Bobby was shocking. Yeah. Like there were some times where, Yeah, like, yeah. I'm just not talking about the outrageous chip he tried when he could have just easily passed the ball in the back of the net. But especially in that first half, there were so many occasions where he couldn't pass the ball, he couldn't get the first touch. Uh, Bobby needs his confidence back. I was so happy when he scored against Arsenal. I thought, oh fuck, okay, Bobby's back. Okay, now things are going to be great. Bobby's going to be in the system. The international break is going to be a key for Bobby Surya. This is what I feel. He has to train to get his fitness levels back and get back to the system. We need Bobby. And Nidhi, I also think Thiago needs to step up his game for the rest of the season. मेरे हिसाब से Thiago and Bobby are two players who Hundred need to percent. just need we need them for the rest of the season. And when I say step up the game, I'm not doubting their capabilities or abilities. We need 100% Bobby, 100% Thiago, and then we can do shit for the rest of the season. यार वही मतलब अब thank God this discussion has moved on from Ballon d'Or. uh, Ballon d'Or, whatever. However, I don't even care about how it is pronounced, honestly. Um, but yeah, like मैं तो I am biased towards Bobby. You know that. You know कि मेरे को मतलब मैं बॉबी की कभी बुराई नहीं करूंगा. But yesterday, Bobby was not at his best, and generally Yeah. we see Bobby very pinpoint with his crossing, with his not crossing, sorry, with his passing to dropping deep, and Bobby is generally very good with that. I don't think I don't think Bobby will have a lot of games like Nottingham Forest. There is too much quality around Bobby in Bobby to have that kind of a game again. Bobby obviously didn't play a lot of time. I mean, he came back after injury, तो वो भी थोड़ा इफेक्ट दिख रहा था बॉबी के ऊपर. But yeah, यार, I mean, honestly, Bobby is absolutely loved, but we need Bobby to get back at his very best. We need Bobby to fire on all cylinders. Like Mana said, Thiago, Bobby, these players are absolutely important for us for the rest of the running of the season, and we hope he's there. Love from Mangalore. Thank you, yaar. Hope's best. Your love, your support um, is absolutely important for us. Yeah, we'll take your question about Torres versus Salah, but let me talk about this first. Be realistic, guys. Do you think we can win the Premier League game against City? Yes, realistically speaking, can, yes, absolutely. Why can't we win it? Will we or will we not? That depends on the day. That depends on City as much as Liverpool. Um, but can, yes, absolutely, 200%. Can, yes. Canto is like, of course, man. Like we are Liverpool. Nidhi, I was I think BR Sport ने एक tweet किया था Nidhi, which was remarkable since the start of the 18-19 season. Liverpool has got 334 points and Manchester City has got 335 points. निधि मतलब लास्ट 4 सीजन में 1 पॉइंट का डिफरेंस है बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी. ये सोच के ही दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है कि क्या लेवल पे दोनों टीम खेल रही है. भाई, तो आज क्लॉप, मैंने नहीं नहीं, बोल बोल बोल. मैं बोल रहा हूँ कि मैनचेस्टर सिटी, हम जो मो साला की बात करते हैं कि वी कंप्लीट मो साला, Klopp completes Pep and Pep completes Klopp. We are two teams that are complementing each other season in season out. We are seeing greatness, और ऐसा greatness ना people should realize that शायद से कभी वापस नहीं देखने मिलेगा. Because we are seeing the two best managers, two very different systems, but two very great teams at each other
वो are relentless. Liverpool शायद से need to win 18 games on the bounce in the league to win the league. 18 गेम, दिस इज भाई लिटरली हाफ ऑफ द सीजन. तुम समझ सकते हो, हाफ ऑफ द सीजन तुम स्ट्रेट जीते हो टू विन द लीग. दैट इज शायद से व्हाट लिवरपूल हैव टू डू. ये स्टैंडर्ड सिटी ने सेट किया है और ये शायद से लिवरपूल करेंगे. मतलब बवाल है यार, बवाल है टोटली. भाई आज मैंने ट्वीट किया था, एंड अगेन अ लॉट ऑफ पीपल विल परहैप्स डिसएग्री, बट ये जो करंट राइवलरी है ना लिवरपूल वर्सेस सिटी, एंड ये ना, जैसे यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल की एक राइवलरी थी, दैट वी हैव सीन यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, दैट राइवलरी वी हैव सीन. ये जो राइवलरी है ना, ये अलग लेवल पे है, बिकॉज इसमें मार्जिन फॉर एरर इज सो मिनिस्क्यूल that it हाँ, is ridiculous. It सही is बात. ridiculous how the standards that we are operating at. एक draw, one draw against Crystal Palace, and you saw Liverpool players, Liverpool fans celebrating because we sniffed that chance. I'm sure, hopefully not, but if we have a draw, same reaction will come from Manchester City fans. You cannot draw games. It Yeah. is that ridiculous. We scored 97 points and we could not win the league. That is the level Manchester 97. City are. Yeah, 97. no, like again, not to disrespect anyone, Sir Alex Ferguson never got to 97 points. They never got to Like 90 points if I'm not wrong. Yeah. I'm not sure about that, but ये लेवल पे लिवरपूल वर्सेस सिटी की राइवलरी है, एंड वी हैव टू गिव सिटी आल्सो द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व. Yes, they have 100%. money. Yes, they have spent money. Yes, they have done all that. But yeah, money, PSG have spent, Manchester United have spent money. Yeah. They are not at that level, right? Yeah. So I think Klopp and Pep, the rivalry is a very, it's a very. I don't think there is Any animosity at malice? the. Yeah. Yeah. There's no Yeah, I don't malice think there is between Klopp animosity and. at the base of it, but Yeah. they are two very, very competitive sides. So this is one for the ages, yeah. I mean, this rivalry is. निधि तू ही बोल I रहा don't था know ना, ऐसा तू ही दोबारा बोल कभी होगा कि नहीं. निधि तू ही बोल रहा था ना कि for all you know they might be just like sipping on wine They together will. behind. Already तू ही बोल रहा था ना निधि, if I'm not wrong. Huh? I think you said that after their times end they might be just sitting down and enjoying a drink together. I'm saying that they might be doing that already Yeah. without outside of the media eye, because I think between Klopp and Pep there is a lot of um, mutual respect. Uh, So, but this is one for the ages, yeah. Um, Jasim, I'll take that question before Manas does. The answer is no. As great, and again, this is nothing against Real Madrid. पहली They बात are, क्लॉप की I स्पेलिंग think, तो करेक्ट लिख दो यार. हाँ, या नहीं ठीक है यार, कोई बात नहीं. यार, honestly, as great as Real Madrid are, as they are, I think one of the greatest clubs in the world. But Real Madrid are absolutely everything that Klopp is against. उसके प्लेयर्स को आपने बू कर दिया ना, वो वो छोड़ के चला जाएगा. Klopp is never going to Real Madrid. He will never fit in at Real Madrid. हो भी गया ना, this will be a very very unhappy situation. Klopp just is absolutely everything against that Real Madrid fans are, the Real Madrid club is. Klopp is never going to Real Madrid. It is just absolutely never going to happen. I can even think that in the current situation, what Barcelona are, I would have thought that maybe Klopp goes there. Atletico, yes. Valencia, even Valencia, yes. Real Madrid, no chance. Klopp will never go to Real Madrid. मैं एक चीज हमेशा बोलते आया हूँ और मैं अभी अभी भी ये बात से स्टिक करता हूँ निधि. इफ Jurgen Klopp goes, I see AC Milan as a possible destination even now. Hmm. और अभी तो AC Milan top of the league भी है. Like AC Milan is 3 points clear of Inter, whatever. AC Milan are on the up. Pioli manager है. AC Milan is the type of club that Klopp would take up. Real Madrid isn't. PSG isn't. I still think Barcelona isn't. Uh,
he's someone who wants a challenge, and a genuine challenge, like to he would want to make. I don't even want to think about it, but Yeah. if he ever takes up AC Milan, he would make AC Milan the powerhouse of Europe again. Like that's why he took up Liverpool. Similar कि भाई ये इतना historic club है जो ये situation में है. Let's revive this. He's given by the end of 2024 9 years of his life. To give 9 years of your life to something in general in the grand scheme of things is huge, and he's delivered, and we are fortunate, and let's just hope that he extends his contract, bro. Like I don't care about, thank you football look at, we don't care about ki uh, By the Madrid way, jaye. football nukkad. By the way, guys, football nukkad is an absolutely amazing YouTube channel that you want. If you want to see honest, fantastic coverage of Indian football, please head over to Football Nukkad. These guys are doing an amazing job. It would mean a lot to us if you go and subscribe to Football Nukkad as well. Guys, you are amazing here. I mean, Indian football ke liye what you're doing is brilliant. A lot to Yeah. learn from that channel जब इंडियन फुटबॉल की बात होए. Honestly for all of us हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं when it comes to Indian football अगर आप फुटबॉल कट पे जाओ. Gee, to be in generation I've seen Ronaldo versus Pep versus Liverpool City. It's pure bliss to watch football and will cherish. Exactly वही मैं बोल रहा हूँ. And Nidhi, I don't know about you. I have seen Ronaldo play live in person. I've seen Klopp live in person. Uh, have you seen either Messi or Ronaldo play in person? Oh, you saw the final. You saw the final, of course. I've seen Ronaldo, I've seen Klopp, of course, I've seen the entire Liverpool team. Have you seen Um, Gerard Midi? no, Oh, I have not seen Gerrard. I've Gerard को not मैं seen Gerrard. देख लिया. I was lucky हाँ, enough to see Gerard play. वो एक रह गया मेरे लाइफ में, बट मैं जेरार्ड को नहीं देखा लाइव. ये after some years when Klopp will leave, do you think Steven Gerrard will be the new manager if he has done Javi like? यार ये भी हमने डिस्कस किया है. No problem, yaar. Football Nukkad, yaar. You guys deserve all the praise. You guys are doing an amazing job. Hope to work with you someday. Hope to collab. Would love it. वो बहुत अच्छा रहेगा यार. But you deserve all the I have we have hardly said anything. Your coverage of Indian football is absolutely amazing, no doubt about it. Now this question यार, इसके बारे में तो हमने इतनी बात की है. यार no, I think Gerard is taking very good steps into becoming a proper manager. Aston Villa when he came in were somewhere around relegation. Now they are looking at a solid top seven, sorry, top eight finish in the Premier League. By the way, saying this on the live, if Gerard finishes in the top eight, I'm giving away a Gerard jersey. The only condition is that you'll have to be subscribed to Menace the Monk. Just reiterating that. But yeah, yeah. But no, I think whatever Klopp does at Aston Villa, we need a better profile. Um, Xavi Barcelona गया क्योंकि Barcelona were struggling and they wanted someone who was closer to the club. Of course, Gerrard is very close to the club, but I think Klopp will leave us in a very good position. So I think that we'll need a bigger name than Steven Gerrard at this point in time, and I'm talking about 2024. अब क्लॉप ने एक्सटेंड कर दिया, वो 3 साल में जेरार्ड ने कुछ कर दिया तो अलग बात है. बट या that's where I'm at. Uh, that's a very This is useful. like That's a the very this is like the Joker and the Batman situation, no? I think you exactly. and I are destined to do this forever. Yeah, This is a yeah. very बट वो जेरार्ड वाला जो क्वेश्चन था ना निधि जो पूछा गया था. मेरा एक उसमें एक टेक है निधि. अभी जैसे मेरा मेरा एक टेक है निधि. लाइक अभी मैनेजर रेंजर्स का कौन है निधि? Rangers का manager is I don't know.
सेल्टिक का Exactly. मैनेजर इज एंज. Exactly. Rangers का manager you don't know. If you ask someone from Spain, विला का मैनेजर कौन है अगर जेरार्ड नहीं होता, okay, they wouldn't know. So why would Liverpool hire someone who's managed Rangers or Aston Villa unless they have done something totally remarkable? That is something which Gerrard has not done. So if you remove the emotion of it, there is no way Aston Villa manager, unless he like gets them into the top four, okay, should be the next Liverpool manager. इसमें सिर्फ इमोशन है. क्लॉप जैसे तूने बोला, जब क्लॉप छोड़ के जाएगा लिवरपूल, whenever he does, he will leave behind a legacy and are probably a world beater of a team. तो जावी जब आया, बार्सिलोना के लगे पड़े हुए थे भाई, सो इसलिए जावी आया. सो हम लोग वो पोजीशन में नहीं है एज मच. एंड स्टीवन जेरार्ड इज माय ऑल टाइम फेवरेट फुटबॉलर. जो बार्सिलोना के लिए शायद से मेसी होगा, वो शायद से मेरे लिए स्टीवन जेरार्ड है. सो दैट बीइंग सेड, आई वुड नेवर वांट जेरार्ड एनीवेयर नियर लिवरपूल राइट नाउ, राइट now, because A is not established, B, we are world beaters right now. Klopp should stay. If he doesn't stay after 24, बहुत अलग options है. And I think FSG are very smart enough to know that Nagelsmann could be one of them maybe. यार विनीत, बियर पे बातचीत, बियर पे चर्चा नहीं है, बियर पे बातचीत है. As of now, there is no schedule. We like to do it as much as possible. Obviously, the work from home situation has helped this a little bit. We'll have to think, but yeah, we will be regular with our content. I can promise you that. Beer Yeah. पे बातचीत will continue. तेरे लिए क्वेश्चन है, डज मानस भाई फॉलो अ रूटीन टू डू यूट्यूब लाइव लाइक एवरी मंडे? नो नहीं. अनुराग, लाइक निधि ने ये बोला, जब भी कुछ लिवरपूल रिलेटेड हम सोचते हैं कर सकते हैं, हम करते हैं. अभी तो इंटरनेशनल ब्रेक है, सो हम यही सोचे कि थोड़ा क्वाड्रुपल, थोड़ा ओरिगी, थोड़ा इधर उधर की बात, ऊपर ऊपर बात कर ले. क्या है, सब लोग को क्या लगता है हमारे सीजन के बारे में. मेरे को बहुत अच्छा ये लग रहा है अनुराग कि काफी डिफरेंट सपोर्टर्स ऑफ डिफरेंट क्लब्स आके अपने क्लब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. So that is great for us. By the way, there are more than 50 people watching. अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है Menace the Monk पे, please do subscribe. It would mean a lot to us. We've got 126 likes on the live right now. 150 24 पहुंचा बचे. दो. 24 तो बनते हैं. 24 जब 150 हो जाएंगे, मैं और निधि बंद कर देंगे और हम खाना खा के सो जाएंगे. आप प्लीज 150 करवा दो. हमारा हमारा एम वो है, गोल है. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू मेनिस इन द मॉन्क. व्हाट इज योर फ्रंट थ्री अगेंस्ट सिटी? तो बहुत दूर है यार, यार दो गेम है. उसके पहले वॉटफोर्ड खेलना है ना. उसके पहले फिर वॉटफोर्ड बेनफिका है, है, फिर बेनफिका है. बेनिफिका है. तो तो वो मतलब यार उसके लिए टाइम है. व्हेन विल यू स्टार्ट सुपर चैट? यार सुपर चैट करेंगे. अभी तो हम बहुत छोटे हैं. अभी तो हमने मतलब हमारा उतना नंबर ही नहीं हुआ है. तो सुपर चैट करेंगे यार. सुपर चैट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आप लोग आके देखते हो, बात करते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी. ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार. बाय द वे मधुसूदन यार, थैंक यू सो मच यार. दैट मीन्स अ लॉट. सॉरी मधुसूदन नहीं, सॉरी विनोद. दैट मीन्स अ लॉट यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नाइट. रचित नहीं यार, अभी नहीं करूंगा. अभी अभी आई नीड टू बी इन बेटर शेप टू डू दैट. दादा could do it because Dada was an international cricketer. Dada could pull off the chest hair better than Nidhi हाँ, can ever will, okay? yeah, Irrespective of the size and shape. yeah. दादा की बात अलग थी यार. Hope you guys take care on your appetite. यार thank you so much for being so thoughtful. यार Vineet, there was नहीं नहीं, one बिकॉज question. बियर पे बातचीत है ना, इसलिए. हाँ. Best goal by Liverpool this गाइस, season 130 according to लाइक्स, 20 और करा दो. 20 130 और लाइक्स. 20 और हाँ. 20 और best goal by Liverpool this season. Yeah, according to me, it is Salah versus City. That's my pick. ओह Um, या, इट्स वेरी टफ टू बीट दैट. बट but अगर but तूने वो that बोल ही दिया है, तूने अगर वो बोल ही दिया है, मेरे को थियागो अगेंस्ट पोर्टो भी याद आता है. वो भी है. मतलब it is a tough question यार. We've scored a lot of incredible goals this season already. Uh, फक ऑल ऑफ बहुत सारे दैट. हैं यार.
डिवॉक ओरिगी वर्सेस वुल्व्स। भाड़ में मैं जाए वही साला, मैं भाड़ में ये जाए ना क्या। यहाँ था, ये ना यहाँ था, मैं बोलने ही वाला था कि डिवॉक ओरिगी वर्सेस वुल्व्स को कैसे भूल सकते हो। अम, एक क्वेश्चन है मानस, हाँ, लेट मी मैं एक बात ब्लैंक ऑनेस्टली बोलना बैंगर। चाहता हूँ। रात रात के ऑलमोस्ट बहुत सारे 11 बज क्वेश्चन है गए हैं। यार, रात के बहुत ऑलमोस्ट सारे 11 क्वेश्चन बज है। गए हैं और 1.5 घंटे बस से 150 हम लाइक लोग नहीं स्ट्रीम डेढ़ लगे हुए घंटे हैं। से कर रहे हैं। बट 50 लोग अभी भी देख रहे हैं। मेरे मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है निधि। निधि, मेरे हाँ, को ये मजा आया। ये मजा मैं पूरे लिवरपूल फैन बेस को देना चाहता हूँ निधि। हाँ, दूसरे फैन बेस को भी देना चाहता हूँ। तो यार देखो यार, मजा आएगा। मतलब 150 लाइक्स कर दो, 150 पे यू नो व्हाट इज एट स्टेक, सो डू इट। मानस, आर यू एंजॉयिंग लिवरपूल यूनाइटेड्स डाउनफॉल एज अ राइवल फैन एंड शुड यू? um, इसका आंसर मैं दूं? तू दे, तू तो बेटर होगा। आई एम enjoying United's downfall. यार सी, I'll say one thing, and I'll go back to my previous comment. क्या है ना कि um, you always had that cousin who laughed at you because you did not have a good job or you didn't have What things. kind of cousins do you have, Nishi? What the नहीं fuck, नहीं नहीं, bro? हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ। मेरे कजिन्स तो थैंकफुली बहुत अच्छे हैं, बट हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ। यू हैव दोज पीपल इन, चलो, इन योर सोसाइटी हु मेक फन ऑफ यू, they are struggling. I would say that I am right now enjoying our success more than United's downfall. Let me put it that way. यूनाइटेड का डाउनफॉल तो जो डाउनफॉल पता नहीं, they're still within a top short of shout for top 4. तो वो तो है ही। तो आई डोंट थिंक दे हैव सीन सच लोज, द काइंड ऑफ लोज दैट वी सॉ एज लिवरपूल सपोर्टर्स बिटवीन 2006 and till 2014 or something. We've seen much lower lows, but I think I'm happier with what we are doing at the moment. United का downfall, I really मतलब, it's cathartic in a way that people who bullied us so much are going through the same or similar. But again, मैं ज्यादा खुश हूँ अपने कंडीशन को लेके rather than United, honestly. बायर्न म्यूनिक चैंप सेज भैया, बायर्न वर्सेस लिवरपूल क्लब को डॉर्टमंड के दिन याद आ जाएंगे। अच्छा, वही डॉर्टमंड के दिन क्या, जब उसने मतलब तुम्हारे 1/10 के बजट में ले लिया था तुमसे लीग, वो वाले दिन क्या? um, यार नहीं यार, सी ऑनेस्टली बायर्न म्यूनिक, वी हैव टू गेट देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बीट बेनिफिका। तो यू नो and and so and we will Jurgen have to Klopp get with there first. Liverpool as well as beaten Bayern Munich. If you remember what Yeah, happened at the Allianz, Sadio Mane, Van Dijk, Mane. So ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है पहले। Thank you, Mr. Tiwari. Uh, I know you are just having a bit of fun. Bayern Munich champ. But I am to if we do reach the semi-final, I'm very excited about it, man. Like excited. it's two great footballing teams, two teams who want to play football the right way, and I will be if we end up playing Bayern, if we reach the semi and अगर हम लोग हार भी जाता है, there's no shame in it. I Yeah, would wish Bayern the best of luck, but I यार am really looking मैंने तो forward to it. मानस से पहले भी बोला है, हाँ, कि आई हैव pegged Bayern Munich as the Champions League winner for me this season. I know yeah. their defense is a little weak and all that, but मैं तो, मेरे लिए तो Bayern is the winner this season. मानस, एक extremely amazing question आया है। ये By पता the है way, मेरे को किसकी याद है? 137 हो गया guys, likes सिर्फ 13, 150 कर दो यार। सिर्फ 13। 13 और 13 और please guys. Yes. हाँ मानस, एक क्वेश्चन है। ये मतलब तूने वो क्वेश्चन तूने वो How बाय much द वे you मानस, rate तू live सुनो chances तो सही, versus लिवरपूल चांसेस वर्सेस लिवरपूल। रुक, सुन तो सही। ये अगर मैं ये क्वेश्चन सही समझ रहा हूँ ना मानस, तू फिलोसफी पढ़ता है? मतलब नहीं ये यार, थोड़ा ना तू शिप मेरे ऑफ, को ये ना थोड़ा शिप ऑफ थीसिस लेवल का क्वेश्चन है।
दिस इज लाइक लिवरपूल को क्लोन बना के, एटलीस्ट द वे आई अंडरस्टैंड इट, दिस इज लाइक लिवरपूल का क्लोन बना के अगर लिवरपूल को के सामने खड़ा कर दिया तो क्या होगा? ड्रॉ ही होगा, और क्या हाइपोथेटिकल, होगा? दिस इज लाइक अ थॉट एक्सपेरिमेंट. तो फिर ड्रॉ ही होगा। अगर दोनों टीम लिटरली आइडेंटिकल है तो ड्रॉ ही होगा। लाइक मेरे को पता नहीं ब्रो, ड्रॉ व्हाट एल्स वुड आई डोंट नो ब्रो, लाइक व्हाट टू से टू दिस। अब मैं थर्ड बियर पी रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हो सकता है। दिस इज सच अ रैंडम क्वेश्चन निधि फॉर मी। बाय द वे 141 लाइक्स गाइस, 9 मोर, नाइन 9 मोर मोर एंड जब तक. 9, जब तक 142 एंड काउंटिंग, 8 मोर। हाँ, जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा अपन इधर ही है. वैसा वो जो मीम था ना, मानस सर आपकी साहिल, बियर कब खत्म होने वाली है? साहिल आप मानस सर की. साहिल सर, मैं पहले, निधि आंसर बाद में दे देंगे। मैं एक पंजाबी हाउस होल्ड से हूँ, बियर हमारे घर पे कभी खत्म नहीं होती। फ्रिज में और 12 पड़ी हुई है, आज नहीं पियेंगे वो। बियर पे बातचीत सदियों तक चलना चाहिए, तो उसके लिए पड़ी हुई है बियर्स। बट टाइम है बहुत। 143 लाइक्स निधि, यस निधि यू सिंग। 143. हाँ, तू क्या बोल रहा था, मेरी बियर कब खत्म सेवन. होगी? एक एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन भी आया है, व्हाई यू गाइस ड्रिंक सो मच अल्कोहल? मजा आता है, नशे, नशा, नहीं नहीं, अभी नहीं, नशे के लेट्स लिए. नहीं नहीं, लेट्स नॉट आंसर दिस, लेट इट बी, लेट इट बी, let it be, uh, let's not get that. We drink beer because we really like beer, that's it. बियर. Or your all तुम time चालू कर, मैं Liverpool आता हूँ. 11? Listen, मैं ये क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ निधि अभी। I'm not going to take this question right now, guys. uh let's see. uh Okay, okay. We're getting pretty quite a few good questions right now. We'll take them in a bit when Nidhi's back, because I cannot take them because Nidhi has access to the account right now. I will keep watching you people. God bless us, Anurag. Thank you. Simple question. Coffee with Karan और चाय पे चर्चा. Listen, हम बियर पे बातचीत पे मानते हैं. हम बियर पे बातचीत प्रोफेसी पे मांगते हैं. सम्राट इज सेइंग एल क्लासिको देखी नहीं देखी यार, बिकॉज आई वाज वर्किंग, निधि आल्सो वाज वाचिंग द लिवरपूल गेम, सो एल क्लासिको इतना हम देख नहीं पाए. राज पटेल बोलता थैंक गॉड यू बोथ आर नॉट इन गुजरात. हाँ जी, हाँ जी, वी आर नॉट इन या यार, मैं तो मतलब 146 लाइक्स. थैंक गॉड आई एम इन 146. बैंगलोर, बिकॉज यहाँ पे बियर बहुत आराम से मिल जाती है. मुंबई में भी थैंकफुली थिंग्स आर गुड. Guys, Pep Fodder saying, guys, please don't spam the chat box like city spams across. I guess. Hey, no, this is. रहने दे Pep यार. Pep, you should नहीं know यार, better. भाई मैं बोल रहा हूँ कि पेप को आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा. मतलब ही इज एब्सोल्युटली ऑसम यार. उसने प्रीमियर लीग फुटबॉल में बहुत सारे चेंजेस ला दिए, इवन विथ द मनी ही स्पेंड एंड द काइंड ऑफ क्लब्स ही इज बीन एट. You have to respect, you know, you have to respect Pep Guardiola. Prozol says, Manas bro, I tweeted your show recording video, and thank you bro for retweeting bro. Love from Nepal. I've been in your channel since 2 months. Thank you यार, Prozol. Really Really appreciate it. मतलब I really want to visit Nepal soon यार. I wish I can do that, साथ में Prazul. चलेंगे, साथ में Prazul, चलेंगे. Prazul, do let me know कि where do you stay in Nepal? Uh, उसके घर पे we could रहेगा क्या? probably. अरे नहीं, किधर रहता है मैं जानना चाहता हूँ बस. 145 likes, 145 likes guys, 5 more and then we'll sign 5 off. more. 5 more. It's, listen, Just we've 5 more. always been live for 2 hours guys. Let's This is just our longest live. ever. Let's reach 150 and then we'll यार ये uh, आज ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ट्विटर वाले बहुत आ रहे हैं. व्हाट आर द चांसेस ऑफ लिवरपूल अगेंस्ट पेप बार्सिलोना? पता नहीं यार, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है दीज थिंग्स. मतलब निधि अच्छा है. हाइपोथेटिकल आंसर होगा. नहीं, Uh, सम्राट का हाँ.
गाइस, यू थिंक हार्वी एलियट को लोन करना चाहिए? नहीं यार, आई थिंक हार्वी एलियट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्क्वाड, ऑफ द टीम. आई डोंट थिंक उसको अब लोन करने वाला उसका टाइम खत्म हो गया. ही इज अ पार्ट ऑफ दिस टीम. सो But लोन Nidhi, तो he नहीं है. only comes on once in 5 games. Yeah. बट नहीं यार, आई डोंट थिंक उसको लोन अब कर सकते हैं. आई मतलब अगेन करने को तो कुछ भी हो सकता है, बट I don't think loan. He's moved beyond loan. Prasol says he lives in Kathmandu, by the way, and is moving to Australia. Oh, okay, okay, fair. So I think we will not be able to meet now, Prazol, because आप Straya जा रहे हो. Good luck, man, Prazol, for everything that you do. Please, I hope अगर ऑस्ट्रेलिया जब भी जाओ, you still follow us and still watch our streams and still watch Menace in the Monk. That would mean a lot to us, man. अब बड़े लोग आ 147. गए हैं स्ट्रीम पे. बाय द वे, बड़े लोग आ गए हैं स्ट्रीम पे. कहाँ हैं? टैकल फ्रॉम बिहाइंड. बाय द वे, इफ यू गाइस डोंट फॉलो टैकल फ्रॉम बिहाइंड, एब्सोल्युटली वन ऑफ माय फेवरेट accounts on Instagram. Premier League, YouTube पे तो फॉलो करो ही. देयर लेटेस्ट वीडियो आई वॉच्ड अबाउट रियल मैड्रिड अल्ट्रास, एब्सोल्युटली अमेजिंग. 6 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छा है. जरूर फॉलो करो. मो साला टू मैन सिटी, हु सेज नो? मो साला सेज नो, वी से नो. नहीं होने वाला है. Yeah. Guys, three more likes and then we'll sign off. 147. 147 हो गया 150. ऐसे लग रहा है हाउस ही खेल रहे हैं हम लोग anyway. But Mo Salah to हाँ, Manchester City will not happen, guys. It will not happen. It shouldn't happen. वो If it नहीं, वो तो happens, इट्स टैकल फ्रॉम बिहाइंड, तो वो तो मतलब अपना मस्त वाला बात करेंगे. बट टैकल फ्रॉम बिहाइंड फॉलो करे यार, उनका कंटेंट yeah. इज हिलेरियस. आई लव इट. इट्स वन ऑफ माय Yep. फेवरेट channels and Instagram accounts. And Hand on heart, do you guys Hawaii. think midfield? Starting point could be different. Hand on heart, do you guys think our midfield versus there could be the deciding point for FA Cup semis and PL? यार, कार्तिकेय, हमारा ना, वी प्ले मैनचेस्टर सिटी ऑन 10th of April. उसके पहले वी प्ले वॉटफोर्ड. उसके पहले वी प्ले बेंफिका अवे. Those are two very big games. I know the focus of the world is on Liverpool versus Manchester City because that that is very good for views and everything. But we have to think about the next game. अभी international break है यार. I mean, let's hope everybody comes back without an injury and Trent is fit. That is the Yeah. most important thing. तो उनका ये क्वेश्चन यार मेरे को थोड़ा प्रिएम्प्टिव लग रहा है. बट अगेन मतलब विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी गेट देयर. मुझे ऐसा लगता है. कितने लाइक्स हुए मानस? देख रहा हूँ भाई. वी नीड टू. या 150. 149 हुआ है. एक और लाइक दे दो अरे, भाई लोग. भाई और बहनों, एक और लाइक दे दो, देन वी कैन स्लीप इन पीस. एंड वी कैन 149 लाइक. स्पेयर आवर लिवर्स. Yes. Oh, thank you, Brazil. यार. Thank you. थैंक यू सो Thank you. मच यार, दैट मीन्स अ लॉट. Which City player would you like to have in current Kevin De Liverpool 11? Bruyne. Kevin De De Bruyne. Bruyne. It's an easy answer. It's an easy answer. De Bruyne. I think De Bruyne would at मतलब उसको अगर ये लिवरपूल सिस्टम में डाल दिया ना, तो अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे. हो गया 150. 151 lads. 151 likes on a live stream on Menace in the Monk for the first time, guys. Thank you so much, yaar. That is amazing. That is amazing. भले 2 घंटे लगे, but that is absolutely सोच नहीं थी हम लोग 8 घंटे बैठे हैं. Like सुबह मतलब अगले दिन सुबह 8 बजे तक हम लोग बैठे हुए हैं. अब ये 155 155 हो गए. 155 जब तक ये says खेल खत्म नहीं होगा, अपन इधर ही छह वाला वो जो मीम है ना, वैसा हट ही नहीं रहे. बट थैंक यू सो मच यार गाइस. I think we should end the live now, Manas. I think it's I need to go eat. You need to go eat. We both need to eat. yeah. So, but before we end this, guys, thank you so much for watching. Thank you so much. Obviously, we were having a bit of fun with the likes. Really appreciate it. Thank you so much, आप लोग ने किया.
Thank you so much for everyone who has been tuning in throughout the course of the 1 hour 49 minutes that we were live. Really appreciate it. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है to Menace in the Monk, please do it. We would really appreciate it. हम लोग ऐसे ही लिवरपूल कंटेंट बनाते हैं. अभी तो हम लोग लाइव थे ही. अरे थैंक यू राज, appreciate it भाई. So we just talk about Liverpool, we talk about football in general, एंड एम यही है कि थोड़ी कम्युनिटी बढ़े, सबके बारे में बात करें, स्पेशली लिवरपूल के बारे में बात करें. सो यस, अप द यस मिस्टर जैन, अप द रेड्स, अप द रेड्स. यस, लेट्स गो. सो मच टू लुक फॉरवर्ड Up टू. the थैंक यू सो Reds. मच. Thank you so much for tuning in, guys, and we'll be back again very, very soon. We are collaborating with few more very, very famous people in the international break. So please do subscribe to Menace the Monk. Nidhi, do you want to say something before we sign off? I think you've summed it up. But again, yeah, thank you so much for joining us on a Monday night. Yeah, 1.5 घंटे you guys were with us. It's a big thing. Thank you for getting us to 2,100. The numbers are always they feel good, but they are a byproduct. The most important thing is that we continue to make videos about Liverpool and football. So with that, thank you for joining us and have a good week ahead and up the Reds. Up the